entire group plays, unitedly we can become a movers and shakers of the market currency. Because this is not an ordinary group, it's a very big group. If you put 100 lots after a year or so, it's worth waiting for 1 year. बीच में अगर कोई करना चाहे, I am not responsible. It is worth waiting for 1 year. By the time everything will come out. So after that, unitedly, if we do it, we can really move the market. We will be the movers and shakers of the market. The first right of this profitability will be rest with us only. Next right only go to others. I am telling you actually. Umashankar ji, I fully agree with you. I am with you on this. Yeah. I am ready for 1 year learning and only then, do some trading. मेरा सजेशन वही है, मेरा सजेशन पहले वो है कि पहले आप एक बेसिक पे एक जो वेबिनार कर दीजिए उमाशंकर जी, एक बेसिक क्या मॉडल क्या है, लोगों को थोड़ा समझ में आना चाहिए ना, एंड देन फिर एक साल तक पेपर ट्रेड करेंगे। सर बेसिक पेपर ट्रेड करेंगे। I agree with you. बेसिक अगर मॉडल में वेबिनार करूं, I have to show certain things. That you decide. That's what I'm telling. Nah, I don't mind. Actually, my ultimate intention is to share everything with my family only. Please understand. If I start telling the things, it loses the value. If I kindle the curiosity, it increases the value. People will try to, actually it is something like that. You see, the children अपने आप कराल करते हैं, अपने आप उठते हैं, अपने आप पकड़ के करते हैं, अपने आप फिर चलना शुरू करते हैं, उसके बाद बड़ों को उंगली पकड़ते हैं. So ये मॉडल इज द बड़ा. तो मॉडल को अपनाने के लिए तो थोड़ा बहुत क्यूरियोसिटी किंडल करते हैं. अदरवाइज let me be very frank, lesser percentage of our group is only doing back testing, deep testing, crunching. बड़ी मेहनत करते हैं. Lesser percentage, let me, including me, in equity I never do any back test. बहुत कम करता हूँ. I like that in every way, in every things actually people do lesser back testing, lesser things actually, data crunching, analytics. But in this in this equity, commodity and all that, you literally need to struggle it out to make some money. इसलिए मैं बोला था उसमें last webinar में भी, it is something like a silk saree fallen on the rose flower plants. मुश्किल है निकालने का. एक एक कांटा अगर ऐसे खींचेगा साड़ी फट जाएगा. एक एक कांटा निकालना पड़ेगा. Then only we will get the silk saree without any tear. So like that, actually, I would like to kindle their curiosity. Let them see. 100% I will disclose everything. I will not hide anything. Everything I will disclose. Every knowledge I will share. And not that knowledge also, that if I impart those knowledge to others, actually, this group is lot of elitists. All big people and lot of knowledge is. So group is full of knowledge. So they can come back. And unitedly, we will try to improve on that things. Actually, some children may be in artificial intelligence. We all sit together. Why not let us improve these things? Actually, it is the moment now. From this moment, this model belongs to family, not my model. But we all let us unitedly. थोड़ा सा patience चाहिए, करेंगे. If not 1 year, 3-4 महीने के बाद start कर देंगे. Let them do it. So how you propose now? I want on my paper trading to people to start with only 5 lots. Okay. I will just share it. First, I will share this, please. Yeah, strictly for paper trading. So let me read out the thing. This is a proprietary training module being given to the members of this group on strictly for paper trading basis, for a term period of 1 year or up to 25th March of financial year. Because 25th March, normally I close everything. I pull back all the money from the broker. From 1st of April only I start. That 1 week I take it as a holiday. Because within that, all my balance sheet will be ready. Everything, P&L account will be ready. So that for it, taxing purpose, income tax purpose, within 1 week, I keep everything ready. So 1st of April, I will give to my CA. So according to his convenience,
he files the income tax return, so that from first onward I take a fresh position. Okay ji. So इसलिए मैंने लिखा financial, whichever is later, totally free of cost. Members are strictly advised not to trade on a real-time basis. Even though the training is being given on a real-time basis, it will be presumed that the members trading on real-time basis by copying the training data on any trading platform will be consciously doing on their own will. यहाँ पर own type करना है, कर देता हूँ. As such, the group or the admin or the trainer will not be blamed or not responsible for any loss incurred in the process. After learning and understanding after the training period, members are free to trade on real-time basis on their own risk on a personal basis. Personal basis means they can use it only for their families. They are not supposed to commercialize it, please. For their personal basis. This being a proprietary model, I expect from members of the group not to commercialize this model for any considerations, except for their personal use only. ये लिखा है only for the language purpose. I am not going to kind of, because moment it goes out of my hand, anything happen. So I am not going to go around suing the people for that. Please don't mind. Don't take it as a totally on a personal note. Okay. This is a paper trading act. People are advised strictly to start with 5 lots only, because I have some homogeneity and uniformity, so that if someone's on a paper trading does 5 lots, someone 10 lots, 15 lots, and someone said, I have taken 15 lots, now how it will come? I cannot able to give training, because training means it is something like a syllabus. In syllabus, set of rules have been taken actually. Some different values, if it is, it's quite difficult actually. I cannot able to govern the traded averages of so many people. Okay, sir. So 5 lots only. I am giving just how the 5 lots will react over the period of time, to have uniformity among the members for year-end analysis, to gauge members' understanding, which may help the training to impart additional training to those who lacks understanding and the nuances, to bring them at par with the others. Okay, sir. So I have mentioned here simple version. Sage ka first version I am going to give. Simple version, SV, 5 lots. Currency, Euro, GBP, USD. I am not taking JPY, because JPY also works. But in Zarada, most of the time, they don't have liquidity. They will stop trading for higher lots. On over a period of time, certainly we have to trade in higher lots. उस टाइम मुश्किल हो जाएगा, then हमारा weighted average and averaging technique, everything will go haywire. So I am not recommending the JPY in Zerodha. ठीक है. जिसका JM Financial में जो HDFC में जब ये सीख गया तो आप वो JPY में भी कर लीजिए. So I know, because liquidity is the problem in JPY. This is my experience. I may be wrong. For the period of time, what I gained from the currency trading. See, contract month April. This contract month will be put within range. I will give, because कोई 74 रुपया 50 पैसा का खरीदेंगे, तब तक वो 60 पैसा भी चले जाए. I will give a range. 5-6 पैसा का range दूंगा. तो accumulation quantity I have to give, because I have to start means accumulation. This is a paper trading one. Distribution quantity, rollover accumulation quantity, rollover distribution quantity. This way it will go for 1 year. 1 year. So in the 1 year, you leave it to me where to come and give some training or taking webinar and all that. That we will decide gradually over a period of time. But इसमें उमाशंकर जी एक क्या था कि you normally give one trade at 4:45 p.m. Correct? Normally you trade for 4:45. That was I heard your earlier webinar. So you said not that case. So now, sir, that is on the according to my webinar on 12th April 2020. Though those things have been redundant, because we have gone a long way. Oh. Now the thing is actually that is a reverse trading. Now also we will use the reverse trading wherever it is required, because that is a very, very vital segment of that trading, currency trading. But that is on a reverse side.
that will be used only when there is a very drastic unfavorable. वो का reverse trading का ब्रह्मास्त्र जैसा यूज करेंगे. अच्छा. That will be used as a brahmastra in a simple term, I may say. But we are following the trend now. We only follow the trend. Yeah, everybody knows actually. It is next to impossible. Equity market या currency market या commodity market सिर्फ दो डायरेक्शन है, लेकिन 99% गवाते हैं. Because why? क्यों गवाते हैं? So crores and crores of people are there actually. If we say I can able to conquer the market, leave alone I am fooling others. I am fooling myself first of all. So why we are going wrong everywhere? We are into a judgmental. ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा. ये मैंने सीखा 25-30 साल का मेरा जो ट्रेडिंग इसमें मार्केट्स में. Then I started. Why we are unnecessarily judging the market? तो गलत हो रहे हैं. तो accept the market. मेरा करेंसी क्या है ना, पूरा का पूरा accept the market. Accept the market. Don't you say that this will market go that side, upside or downside. Rather, you make such a solutions and be ready. If it is upside, तभी भी कमाना है, downside तभी भी कमाना है. ये मेरा पॉलिसी. इसलिए मैंने रिवर्स ट्रेडिंग को लेके आया. तो आप कब बताएंगे? मॉर्निंग को बताएंगे या कब बताएंगे? और whenever you मतलब जब भी आपको ट्रेड नजर आएगा, then you will send this message. बिल्कुल बिल्कुल. जब भी ट्रेड नजर आएगा तो इमीडिएटली ये शीट आ जाएगा. Every time with this sheet only it will be there. Okay, okay. Or every time this sheet will accompany. No, we can expect this on a weekly basis or on a monthly basis. Or sir, entire year you will not come across more than 7 to 10 longs and 7 to 10 shorts. That's all, finished. तो बाकी टाइम क्या करेंगे? बाकी टाइम पैसा गिनेंगे सर. इसमें पैसा आएगा, गिनेंगे सर. और क्या करेंगे सर? फुली एक्चुअली है ना सर, जो जितना ज्यादा अगर हम लैपटॉप इसके साथ ग्लू होते गए, चिपके रहते हैं, पैसा नहीं आएगा. सर, we should stand where we are. The market should come in our directions instead of chasing the market. Passions चाहिए सर. फॉर एग्जाम्पल यूरो ने लिया ना सर 10,000 20,000, पहले नेगेटिव में पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया ना. बिकॉज currency is the only thing, sir. Actually, I'm humbly to say the currency is the only thing in the world, national currency. I'm talking not about the crypto and all that. Where every currency, हर currency के पीछे जो चाचा बैठे हैं सर, RBI गवर्नमेंट जब तक है, तो something like 17th December and all that, it has already came down because RBI moderate. RBI का हर हफ्ते का काम है moderate करने का. Because balance of payment is inward. Our economy is at, it will be risk. If they allow the cartels to move around freely, तो वो तो अपना पर्सनल वेलफेयर के लिए, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इंडिया को, they will really make the India horrible. That government of India cannot afford to do that because they have imports and exports and the politics also involved. If the currency depreciates too much, 200 रुपया क्रूड बेचना पड़ेगा, गवर्नमेंट गिर जाएगा. अगर करेंसी अप्रिशिएट्स टू मच, हमसे कोई आलपिन भी नहीं लेंगे, महंगा हो जाएगा, लेबर मार्केट क्रैश, अनएम्प्लॉयमेंट क्रैश, गवर्नमेंट डूब जाएगा, खत्म, गिर जाएगा. सब ये सब पीछे है ना, हमारा पीछे आरबीआई है. जब आरबीआई है 100% जो नीचे जाएगा तो ऊपर आएगा, जो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, शूर शॉट आएगा. So why I am telling you, see, I have been trading in currency for the last 6 years. I never had one day sleepless night. मजे से सोता हूँ सर, मस्ती से सोता हूँ, मुझे पता आएगा. एक दो लाट में हम लोग सोच रहे हैं. Myself and Muralidhar Rao, I have to be thankful to, because again and again I remember him. Actually, why Muralidhar को मैं remember करता हूँ. He was the person instrumental in me coming to the currency. Otherwise, I was loitering around equity markets only, गोल उलझे हुए थे. जब उन्हें पता है, या उमा तुम इधर आ जाओ, मुझे पता है तुम तो इतना डीप जो काम करते हो, इधर आ जाओ, करेंसी में आ जाओ. मुझे ABCD नहीं आता. Yes, hold my fingers and put me into the currency. Of course. तो इसलिए मैं उनको गुरुजी मानता हूँ. करेंसी में गुरुजी के बहुत ही आगे में निकल गया. But still, I have a very highest respect for Mr. Muralidhar.
Now I am standing in such a position, making money because वो दिन मैं नहीं भूल सकता वो मेरा मुंगली पकड़ा, like that. वो दिन नहीं भूल सकता जब मैं कोठारी जी का कांटेक्ट में आया. It has improved me a lot. I was having only simple webinar. After keeping in touch with Mr. Kothari, I came into this group. I gained huge knowledge about so many things. I have already imbibed in my currency trading and all that. So many things. So it is not like that I have to take from this group. So I have taken a lot of things from the knowledge from the group. It is my duty, it is my societal responsibility to give back to the group also. Otherwise, I will be doing a sin. I will be doing a sin, which I don't want. Can we assume, Umashankar ji, can we assume currency trading is very similar to bank nifty and your nifty trading? Totally opposite. No, similarity. No, the no, trend not may be at all. opposite. Trend may be opposite. What I'm trying to what you are doing in currency, that your model, can we have the same thing in nifty and bank nifty also? No sir, no sir. ये currency model का निफ्टी में काम नहीं करेगा, because वहां पर wide range of gap up opening and gap down opening. Black swan event. मार्केट में ब्लैक स्वन नहीं आएगा, एवरीबडी विल लूज. लेकिन निफ्टी ये करेंसी में नॉर्मली क्या है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब भी मार्केट ऊपर चलते जाएगा खुशी खुशी है, कोई टेंशन नहीं. लेकिन हम करेंसी में लॉन्ग में जाएंगे उस टाइम. तो फिर हम वो बैंक निफ्टी में करते ही क्यों काम, निफ्टी में क्यों काम करते हैं? व्हाई डोंट वी वर्क ओनली इन करेंसी देन? व्हाई डोंट वी वर्क ओनली इन करेंसी? Sir, currency में sometimes far less compared to the equity plays. People are not aware of it. No, currency market is at least 100 times bigger than your equity market. Even more than that. The volume, no, not at all. Volume wise bigger. Because of international settlements, volume wise currency market is very big. But that is what I'm trying to say. When the market is so big, then why we are in equity market? Then we should do only in currency, no? Absolutely right. That's what I also wish. Time and again telling, but currency market is so big in volume, but very small in players. Only industrialist corporates, those guys actually, of course, they have to hedge their this export income and all that. So they go for the currency hedging and all that through derivatives, various sort of derivatives. Even IT corridors, these currency models can be used in IT also. Because in IT, they purchase derivatives from MNCs. Actually, sometimes it works, sometimes it not. You take the annual reports of the IT people, Infosys, TCS. Certain years, they lose in lakhs, 200 lakhs, 100 lakhs. They used to lose in currency also, in hedging also. But if they do it properly, they can make it. I am not telling my model will get I was you discussing with Mr. Pitambaram ji yesterday, and he was telling me, even if we do a trade with 3 paisa difference, that means ki, whenever the price goes above by 2 paisa, I will book profit. And whenever it is going down by 3 paisa, I will exit, something like that. If you do, even that I will be able to make daily maybe 1,000 to 2,000 rupees very easily in case of currency. आराम से 3 पैसा का 2 पैसा का भी अगर आप ट्रेड करो, you can really make money. ठीक है? तो जब ये सब है, तो then why we are wasting our time in nifty and bank nifty and all those things? Awareness. Lack of awareness. Nothing more than to say. Lack of awareness. Currency पिताम्बरम जी आप कुछ बोलेंगे इसके बाद? पिताम्बरम जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? जो कल आप बता रहे थे कि ये 3 पैसा 2 पैसा. सर, इसमें मेन चीज क्या होता है, जो भी स्क्रीन के सामने टाइम दे सकता है, उसे पता है तो 10 से 20 पैसा 30 पैसा ही घूमना है. लेकिन वो 10 से 20 पैसा उसी बीच में आपको 10 से 15 ट्रेड देके जाता है, छोटे छोटे ट्रेड. और जैसे लोग कहते हैं कि बिना ब्रोकरेज का काम हो रहा है आजकल फिनवेशिया में, तो उसको सिर्फ अदर चार्जेस ही आने हैं, जो कि बहुत कम रहता है. तो आप कम पैसे में भी ट्रेड कर सकते हैं. वो तो नेग्लिजिबल है, उसमें कुछ चार्जेस ही नहीं है. हाँ, राइट. बट यू नीड टू बी इन फ्रंट ऑफ द सिस्टम और यू नीड टू रन एन एल्गो. तो हम तो सिस्टम के सामने ही हैं, जो सारे रिटायर्ड वाले लोग हैं. नहीं, मतलब बहुत से ऐसे आदमी है ना, ऑफिस गोवर्स है, वो नहीं कर पाते हैं. सर कोठारी जी, पीताम्बरम जी सही कह रहे हैं सर. एक्चुअली देखिए, जो ऑफिस में जाने वाला तो नहीं बैठ सकते बिल्कुल, बिकॉज उनका ब्रेड एंड बटर विल बी आउट ऑफ द वे. ठीक है. अनदर थिंग, जो रिटायर्ड पीपल है, जैसा मैं हूँ, तो मैं पूरा पोता के साथ बिजी हूँ. आई डोंट वांट टू मिस द बेस्ट आउट ऑफ द बोथ द वर्ल्ड एक्चुअली. ठीक है. आई ऑलवेज प्ले विद द ग्रैंडसन. ठीक है. मुझे वो भी खुशी चाहिए, पैसा भी चाहिए. सो एक्चुअली
जैसा पीताम्बर जी क्या लैपटॉप के सामने बैठे हैं सुबह से शाम तक 9 से 5 तक लॉट ऑफ टाइम मोर देन इक्विटी पैसा बना सकते हैं जो 2000 3000 5000 बना सकते हैं वो भी अकुमुलेट हो जाएगा लैक्स में जाएगा लेकिन मेरा व्यू है दैट इज अ रिटेल ट्रेडिंग आई वुड लाइक टू बी एज अ होलसेल ट्रेडर राइट नहीं आपका मॉडल भी यूज कर रहे हैं आपका मॉडल भी यूज कर रहे हैं और इनका मॉडल भी यूज कर रहे हैं दोनों बिल्कुल है सर मैं तो कह रहा हूँ सर हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ तो जो लास्ट व्हाट्सएप मैसेज में मैंने एक्चुअली मिस्टर some gentleman has written I apologize because of him because we should not stop the flow of knowledge at any sake. अब ग्रुप में अगर restriction आते गया flow of knowledge बंद हो जाएगा. Only thing is I was giving a small joke about the freedom. People should can wave the stick till the others knows I am not affected actually. That's all. Nothing more than that. थोड़ा सा कूली सोचेंगे ना सर everybody will try to give some space to everybody. We are a one family. That's all. One cannot blame others. Actually, I never be of that opinion at all. थोड़ा सा क्या है ओल्ड एज में थोड़ा सा नर्वसनेस आ जाता है क्या है अभी कोर्ट कचहरी का थोड़ा सा डर तो रहता है सर वो रैश ऑफ ब्लड नहीं है ना डर तो रहता है ना तो दैट इज द रीजन आई अगेन केम फॉरवर्ड आपके इंटेंशन अच्छे हैं ना आपके इंटेंशन अगर अच्छे हैं then I am telling you law will never catch you अगर आपके इंटेंशंस अच्छे हैं I always believe in this one मेरे को भी बहुत लोग बोलते हैं आप क्यों इतना वेबिनार करते हो क्यों इतना ये करते हो मैंने कहा मेरा इंटेंशन डिफरेंट है my intention is to earn not to earn the money from the group when my intention is good I will not be scared of any police action or any SEBI or anybody so वो ये जो आप कह रहे हैं वो हमारा प्राइम मिनिस्टर भी यही कह रहा है अगर आपका नियत ठीक है आप कुछ भी करो आई एम देयर टू प्रोटेक्ट यू बोलते हैं ना सर एक बार एक मीटिंग में बोला उन्होंने ठीक है सर आई एम इक्वेट्स योर स्टेटमेंट टू हिज एक्चुअली स्टेटमेंट एक्चुअली अगर जब हमारा इंटेंट ठीक है वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट बट इंटेंट ठीक है वी डोंट नीड टू वरी अबाउट लेकिन इसके बीच में कानून भी आता है ना तो थोड़ा सा तो टाइम वेस्ट हो जाता है ना सर वो क्या होता है कानून में लास्ट में जाके फ्री होते हैं लेकिन ये बीच का पीरियड है ना उसी वो कौन भोगेगा वो मुश्किल हो जाएगा ना सर एक्चुअली दैट इज द रीजन आई केम फॉरवर्ड टू जस्ट गिव यू अ सिंपल ब्रीफ तो सी आई एम नॉट हर्टिंग एनीबॉडी आई नेवर हर्ट्स एनीबॉडी ओनली थिंग इज शेयर द नॉलेज ऐसे कुछ अगर स्टेटमेंट आ जाए तो कोई जैसा जम्मा फेफलो मिस्टर as you rightly मोहित कक्कर actually I am also trying my level best to bring him back to this family actually I am 100% confident he will also come but तो ऐसे अच्छे बेस्ट नॉलेज है ना सर ग्रुप में से नहीं जाना चाहिए सर ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है एक्चुअली so I can one of the senior most Umashankar ji you are a role model for everybody at the age of 67 you are so active and so eager to share and आप ऐसे अगर हम छोड़ के चले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा तभी तो मैं आ गया ना सर तभी तो है ना मेरे अंदर सर वही तो कह रहा हूँ सेल्फ काउंसलिंग पूरा नाइट मैंने सोया नहीं सर मैं आई नेवर से 100% परफेक्ट सर अगर मेरा अंदर भी विजडम कम हो गया मैं आपसे कम है मेरा विजडम में निकल गया एक दिन गुस्से में क्योंकि गुस्से में इसलिए आया था नर्वसनेस आ गया I never said I openly accept everything actually. If I am wrong, openly I accept. I prostrate in front of 1,000 people. I am not at all worried about it because it helps me rectify myself actually. How to behave. Right. Learning is always from birth to death. Okay. It rectify myself how to behave first of all. My own behavior. It's all behavioral science actually. It's a very, very, very higher level. Why should I not learn from you? Even though you are angry at my art, that's the reason time and again say you are a friend philosopher guy. There are so many attributes I could be able to see in you actually. Having 50 groups, yeah, ordinary task nahi hai. Just like that, I am not appreciating in front of you. I am telling you, I am putting the facts in front of the entire group actually. 50 group चलाना बस की बात नहीं, मेरे कम से कम मेरे बस की बात तो नहीं है. तो एक्चुअली क्या है ग्रुप में थोड़ा सा स्पेस दे दें फ्रीडम तो हर एक को मिलेगा इट शुड नॉट अफेक्ट द नोज ऑफ अदर्स दैट्स ऑल नथिंग मोर देन दैट्स अ रियल आपका अच्छा या वो सजेशन है तो मेरा भी सजेशन और मेरा भी रिक्वेस्ट टू ऑल द मेंबर्स यही है कि व्हेनेवर यू आर मेकिंग एनी कमेंट ऑन एनीबॉडीज पोस्ट
थोड़ा सा सोचिए कि कहीं उसको दूसरे को वो हर्ट तो नहीं करेगा। जितनी बार हम लोग स्माइलीज पोस्ट कर देते हैं, वो स्माइलीज का भी ना बहुत बहुत खराब इम्पैक्ट जाता है कितनी बार। सपोज यू से कि मैं बहुत तेजी से हंस रहा हूं मैं, या कुछ मैंने आपने ऐसा स्माइली डाल दिया कि आई एम इन वेरी एंगर मूड, so that also affects somebody else no sentiment. So my request to everybody is please be careful whenever you are making any post or whenever you are commenting on anybody else post. That is my sincere request to everybody, so that we can avoid these type of incidences. Okay, yeah. क्योंकि कई बार according to the age people react, sir. Yeah. Youngsters, they can withstand the pressure. Oldies, some people may withstand. At least I am not able to withstand the pressure. Let me accept. I have the weakness actually. I become nervous immediately because क्या मैं किसी के साथ मैं पंगा लेता ही नहीं है, मैं किसी के साथ मैं बुरा करता नहीं, जितना कोशिश तो करूंगा मैं। एक्चुअली क्या है, ठीक है ज्यादा हो गया, मेरा पिताजी ने सिखाया, ठीक है कहां पर प्रॉब्लम है, डोंट थ्रो द स्टोन, तो बेटर कीप अवे, दैट्स ऑल. So I just kept away. So yesterday the same thing has happened last week. Actually, I just moved out. That's okay. Okay. We'll all be more careful. We'll all be. I can assure you on behalf of everybody, we will be much careful now, making any such type of no. Sir. Yeah. Sir, this is a big things actually, sir. I actually see it's not like that, sir. I never expect any laurels. I never expect appreciation. I never expect. I am doing my karma. That's all. I mean, as I simply put it now, I have learned a lot of things from this group. अगर मैं ये वापस ग्रुप का नहीं दिया ना, मर गया ना, I will have a lot of things. So I am actually sentimental. Let me be very put it actually. When you learn from the things, जैसा स्कूल में जाते हैं सर, पढ़ते हैं सर, कॉर्पोरेट लाइफ में जाते हैं, जब एक बार उस जगह जाएंगे तो ना वो हमारा वो जो स्कूल में प्रोफेसर, कॉलेज प्रोफेसर में पाँव नहीं छूते हैं, देख के हम खुश हो जाते हैं ना सर, हमारा टीचर वो भी रिकलेक्ट बैक ऑल दोस थिंग्स. वी आर ए गुड समरिटन, वी आर ए गुड समरिटन. वी गो उनको स्कूल टीचर के साथ, वो 1 से 6 क्लास से 6 क्लास तक 8वीं क्लास में हमने पढ़ाई, हमें पढ़ाई दिया हो, फिर भी जाके उनके पास है पाँव छूते हैं. इवन इज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मोदी नहीं किया, हम तो कुछ भी नहीं है. ऐसे होता है. So it is the way of my life actually. It's not a complaining on everybody. That's the reason I am telling you. I never expect any apology. I never. Only thing is, we all should have give some space to others actually to ensure that growth of this group and it blossoms. Suppose even if there is any hiccups in the currency model, we all should sit together. I am just giving a lead, and there are a lot of masters are there, gurus are there. We will develop into a perfect one, and after that, after some time. Maybe a 1 year or 2 years, never mind. Always is life actually ahead of us. If it is not with us, our younger generations, okay? Because most of it is we are already have in the reservation. Here the waiting list, RECA confirmation. I'm putting it in a different way. Let me after retirement, I consider every day is a bonus for me. Okay? अभी जो इंसान का ईगो इतना पहुंच गया, वेटिंग लिस्ट RAC कंफर्मेशन भी नहीं है सर, बिना मांगे टिकट देते हैं, जैसा 2019-20 का कोविड के थ्रू सब कंफर्म हो गया. देयर इज नो वेटिंग लिस्ट, देयर इज नो RAC. आपने जर्नी अटेम्प्ट नहीं किया, वो दे दिया जर्नी को. दिस इज ईगो सर, ईगो इट्स अ नेशनल ईगो. 1 person ईगो, 2 persons ईगो क्लैश फॉर द सुपीरियरिटी. मुझे इंपॉर्टेंस चाहिए, आई हैव टू लीड द थिंग्स. सर ये सुपीरियरिटी एंड इंपॉर्टेंस का जो ईगो है ना, इट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, वेदर अक्रॉस इंडिविजुअल्स और वेदर अक्रॉस फैमिली और वेदर अक्रॉस सोसाइटीज और कम्युनिटीज और बिटवीन द नेशन आल्सो. ईगो भयंकर. अभी क्या द वेटिंग लिस्ट RAC कुछ भी नहीं है. 2020 में कोविड को तो टिकट ही दे दिया, कंफर्म टिकट. कोतर जी, see, Umashankar's message is very important, maybe on a frequent basis, right? Now, if you allow members to post their views also, it will be crowded. Now, in that crowd, somebody misses that message, then it becomes a problem. Now, how do we avoid that? Sir, we should have admin only group.
नहीं यार, वो उसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि एडमिन वाले ग्रुप में है ना, अब ऐसा लगता है कि मतलब somehow I am not comfortable in that. That means it's a one way traffic. One way traffic मतलब somehow I don't relish. आप बताइए. I have no objection. I can create one group as an admin only. But sir, we already have FFP currency group. So if anyone wants to ask anything or share anything, then we can put our post there. But ये कर सकते हैं, ये कर Uma सकते sir हैं have कि a admin only group, then we'll get all the trades. But So the that point means is absolutely correct. that means कि जो करेंसी वाला जो उमाशंकर जी का जो ग्रुप बनाया है, let it be admin only, and Yes, बाकी जो करेंसी वाला ग्रुप है, that can be the open group. So ऐसा that कर would सकते be a हैं. great But then help. उमाशंकर जी Great help. आपको वो ग्रुप भी मॉनिटर करने पड़ेंगे. मतलब उमाशंकर जी आपको जो अपना एक जो एक्सक्लूसिव ग्रुप है जो एडमिन वाला होगा, that you will monitor as well as other currency group also. Yeah, little bit I differ here actually, little bit, if you admit me actually. See, we can have admin, I have no issue at all, but you see, I need feedback also. So for last to Saturday or Sunday, let us keep open that group. Let everybody comes in. Yes, sir. नहीं समझे नहीं. We have a 3 currency group and we have a 1 currency Umashankar group. So currency Umashankar group will be your admin group only. Okay. Now जो बाकी जो 3 currency के जो normal group है, group 1, group 2, group 3, that will be the open group. Only thing is you will be watching what is happening in the normal groups also. So whenever we have a query, you will reply there, but your group will be the exclusive your group. Correct. I was about to suggest the same thing, sir. ऐसे ही बाकी भी लोग करते हैं कि एक सिर्फ ट्रेनर वगैरह का रहता है, so that all important messages are not lost into all other discussions. सिर्फ उनका रहता है और दूसरा ग्रुप रहता है कि आप कुछ भी कर लो डिस्कस फिर वहां पे. ऐसा ये सही थी. If it is Umashankar group is alone, that doesn't mean he is alone. Maybe Pitaramji and you can be there, and someone who is contributing to currency, only those admins can be there in the group. They will only post their messages. No, let this group be exclusive group here. Let this Umashankar ji group be the exclusive Umashankar ji group. Similarly, we can have one Pitambaram ji का exclusive group. अच्छा. So that there is no confusion. नहीं तो क्या हो जाता है ना कि वो जब उन्होंने कोई पोस्ट डाला और इन्होंने कोई पोस्ट डाला तो दोनों का कंट्रडिक्शन होने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसके. That I observed. सर इसमें एक और एडवांटेज है कि जैसे उमर शंकर जी ने बोला कि जो मॉडल इनका है तो a curiosity should come up from the users, तो वो एक एक्सक्लूसिव ग्रुप रहेगा. तो उससे ये है कि हम लोग के पास सारे ट्रेड रहेंगे एंड वी आवरसेल्फ ट्राई टू डिकोड द मॉडल कि कैसा कि ये ट्रेड क्यों लिया, कैसा लिया, तो हम लोग का भी दिमाग चलेगा और वी वुड बिकम बेटर. ऑब्वियसली उमाशंकर जी आफ्टर 1 year और व्हेनेवर ही इज गोइंग टू शेयर दैट विद अस, बट हम लोग खुद भी एफर्ट मारेंगे वो देखने के लिए. नहीं तो आपका सजेशन क्या है? आपका सजेशन बताइए ना क्या है? एक्सक्लूसिव ग्रुप एक उमाशंकर जी का रहना चाहिए एंड देन द अदर वन एफएफई करेंसी शुड बी देयर फॉर नॉर्मल डिस्कशन. हां, फॉर नॉर्मल डिस्कशन. नहीं, व्हाट अबाउट योर्स एंड पिताम्बरम जी का? अरे हम सब ठीक है यार, हम लोग तो वी आर नॉट एक्सपर्ट. हम तो कंपाउंडर लोग हैं. एक्चुअली आई एम अ कंपाउंडर एंड दे आर द एमपी, दे आर द एमडीज. सो लेट एमडी हैव एक्सक्लूसिव ग्रुप एंड कंपाउंडर तो कहीं भी घुस जाएगा, डोंट वरी. अच्छा, ठीक है सर, ऐसा आई थिंक दिस इज गुड. हां, तो ये वाला मॉडल लगाते हैं तो इनको उसमें एक्सक्लूसिव उन्हीं के पोस्ट रहेगी जो इनका ग्रुप रहेगा और बाकी ग्रुप को भी मॉनिटर करेंगे. सिमिलरली पीताम्बरम जी का भी जो है एक एक्सक्लूसिव करेंसी का ग्रुप पीताम्बरम जी का रहेगा और बाकी जनरल डिस्कशन चलते रहेंगे. सो दैट नो दे आर आल्सो अवेयर कि उन्होंने क्या पोस्ट किया था. देन वी कैन आल्सो रिव्यू दोस पोस्ट वेरी अर्ली. मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे पूरा ग्रुप ढूंढना पड़ रहा है क्योंकि देयर विल बी वेरी लेस नंबर ऑफ मैसेजेस इन दोस एक्सक्लूसिव ग्रुप. तो बहुत आसान रहेगा अपने को मॉनिटर करने में. सर ये एक और रिक्वेस्ट है. एक्चुअली आई हैव बीन कीपिंग इन टच. I am trying to contact Mr. Mohit Kakkar also. He's a very vital link actually. तो उनको आपके ग्रुप में डाल दीजिए, एक्सक्लूसिव ग्रुप के अंदर. एडमिन में उनको भी एक्सक्लूसिव ग्रुप में डाल दीजिए and let him also be in the other groups. I will be really appreciate if you can join it, but I believe he has a professional commitment. तो आप देख लो अगर if you can join back, I will be very happy. Yeah, certainly. Let him. I am not committing. Let me try to bring back him. Back to the family. That's all. Correct. जैसे आपने बोला ना
फैमिली में भी जब व्हाट्सएप ग्रुप में क्विट कर लेते हैं, उसके बाद आपने क्या बोला, फिर मनाना पड़ता है वापस करने के लिए। ऐसा ही होता है सर। आई उनको रियलाइज होता है उनको रियलाइज होता है कि छोड़ तो दिया, लेकिन आई एम मिसिंग समथिंग। आई एम मिसिंग समथिंग, आई एम मिसिंग दैट वाइब्रेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स, डिस्कशंस। वो आपको भी 2-3 दिन लगा होगा ऐसा, अरे यार ये क्या हो गया। सब एम्प्टीनेस लगता है ना। नहीं है सर, या बिल्कुल। उमाशंकर जी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ग्रुप चलाया है ना, इसका एक ही मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं सोसाइटी से मैं लगा रहा हूँ। मतलब नहीं तो पोस्ट रिटायरमेंट ऐसा लगता है कि यू आर सडनली बिकम टोटली अलोन इन द वर्ल्ड। कोई सलाम नहीं करता, कोई बात नहीं करता, कोई मिलने नहीं आता। बट व्हेन यू आर इन सच ग्रुप, तो एटलीस्ट मतलब मेरे को ये फीलिंग लग रहा है कि आई एम वेरी एक्टिव। और मेरे को लगता नहीं है कि मेरे को रिटायर हुए 1.5 साल हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि जब कल ही रिटायर हुआ, मेनली बिकॉज ऑफ ग्रुप ओनली। आई एम सो इन्वॉल्व इन द ग्रुप। सर सर आपको तो लग रहा है कल ही रिटायर हुआ, तो मुझे तो लग रहा है अभी मैं काम ही कर रहा हूँ सर, रिटायर ही नहीं हुआ। वो हिसाब से तो आई एम वर्किंग मोर देन दैट व्हाट आई वाज। क्योंकि कुछ मॉडल बनाना, ये बनाना, या मैं आई हैव टू नाउ रिपोर्ट टू माय बॉस मिस्टर कोतारी, या मॉडल बनाना 14 घंटे काम करता हूँ, अभी भी 15 घंटे काम करता हूँ, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर इधर अरेंज करते हैं। तभी तो ऐसा ही ऐसा। नाउ आई एम मोर देन बिजी than what I was in my previous life, actually, in my first innings. Second innings तो बहुत ही ज्यादा टाइट हो गया। अच्छा है कल मेरे को फोन आया था, कल एक मिस्टर फोन आया था, मिस्टर विभूति मिश्रा जी का। ही रिटायर्ड एज सीजीएम फ्रॉम बीपीसीएल। तो मैंने उनको यही बोला कि आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लो एंड हमारे वेबिनार को थोड़ा आप अटेंड करो। आप यू विल फील सो हैप्पी कि दैट यू आर इन्वॉल्व विद द सोसाइटी। एंड देन ही इमीडिएटली एक्सेप्टेड इट। आई थिंक टुडे ही इज इन द ग्रुप आल्सो। He must be watching, he must be one of the members. तो मैंने उनको ये बोला कि post retirement we have to be with the society, we have to discuss, we have to share our ideas, then only you feel कि I am part of the world. Otherwise क्या होगा, वो घर के घर में 10 दिन के अंदर you will start deteriorating very fast. फिर तो कुछ नहीं है सर, सुबह उठे, मुंह धोए, चाय पिए, सब्जी खाएं और रात को सोए, वो इट्स ऑल एनिमल्स लाइफ एक्चुअली। व्हाट इज देयर इन दैट? और बीच में जाके बाजार में जाके सब्जी लेके आए, मच्छी लेके खरीद के लेके आ गए, बस खत्म हो गया हमारा वहां पर दुनिया। और आपकी वाइफ भी आपको ऐसे ट्रीट करेगी कि जाके दूध लेके आ जाओ, जाके सब्जी लेके आ जाओ। हाँ नहीं, वो भी सर, वो भी जरूरी है। बिकॉज एक्चुअली मैं इस विषय में भी मैं कैसा सोचता हूँ एक्चुअली। आई टेक फ्यू मिनट्स। अब जैसे जब हम बैचलर है ना सर, तो हम लाइक करके किसी लड़की से शादी किया है ना, right. So then we have the offshoots actually, fine. So naturally जो हमारा बच्चे हैं, हमें बहुत प्यार से बड़ा किया ना सर। right. कुछ भी काम का वो गलत काम कर प्यार से बड़ा किया। जब बहुत बड़ा कर दिया, ठीक है, ये नहीं है जो बड़ा हो गया ना, ऐसे नहीं। तो क्या करेंगे, वो पड़ोसी के जाकर मदद करेंगे क्या? हमारा ही बच्चा है ना, why not help us actually? पहले भी हम करते थे ना जब इतना सारा, ठीक है। I would love every elders in the families to set the precedence actually. अब उनको हम अभी मदद नहीं करेंगे, हमारा बहू को हम मदद नहीं करेंगे, हम सारा ये पोटली बांध के लेके थोड़ी जाएंगे। I keep all my cash in my almari. My daughter-in-law, actually I am very much thankful to God. I have grown my daughter-in-law when she was right from 2 years to 5 years. I only have grown. God thought यार इससे बढ़िया आदमी नहीं मिलेगा, इसको मेरे घर में भेज दिया। वो तो अभी भी मेरे सिर पे नाचती है बेटी बन के। She is not my daughter-in-law. क्या वो आके बोल ले लेती है, पापा पैसा लेके जा रहा हूँ। कभी नहीं बोला अरे बेटे पैसा ले लो, मुझे मत बताया करो। Yeah, that is the way actually. What is wrong in that actually? If I am doing to my family, what is wrong in that? If I am doing to my wife, what is wrong in that? मैं कभी मैं let me be very frank, bluntly I am telling. मैं कभी वाइफ का जो तबीयत ठीक नहीं, साड़ी बगैर पहन सुखा देता हूँ, बोल देते हैं कहीं, अरे आपको गुलाम का शेर का जो उसका बीवी का गुलाम है, या व्हाट नॉट। शी इज नॉट ओनली एन ऑब्जेक्ट आइटम टू चेरिश, वी आर शेयरिंग अवर थिंग्स एक्चुअली। शी इज सर, जैसा मेरा पिताजी बोलते थे, जो वाइफ इज लाइक दैट uprooting a tree and keep it on others place. When she come from a family 25 years अपना माँ बाप के साथ उगाड़ के ये पूरा का पूरा पेड़ को दूसरी जगह लगाए, सब वो पेड़ वो फूलेगा नहीं, वो फ्रूट नहीं देगा, फलेगा नहीं। तो उसके लिए पलने के लिए क्या कौन देते हैं पानी, कौन देगा? देना चाहिए पास, जहां पर लगाया उसी की वहां पर हकदार देना है ना। जब उस जगह का हकदार अगर पानी वगैरह दिए
तो it nourishes that, so that पेट बहुत ज्यादा बड़ा होगा. तो what is that party? पानी वगैरह क्या? पानी का मतलब love and affections. I have in belief one can conquer the whole world through love and affections, not with the ego. तो जितना love and affection, मेरा पिताजी मुझे सिखाया, अब जितना लव एंड अफेक्शन से टाइम लगेगा जीतने में, जितना लव एंड अफेक्शन अपना डॉटर इन लॉ को दें, वो दिन आएगा जब उनकी मम्मी फोन करेगी, मम्मी अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा है, तो शी विल से जिस दिन वो बोलेगी, मतलब समझ लो आप जीत गए. नाउ इट इज स्टिल यू, आई एम यूजिंग इट. वो अपना जिस घर में गया, उनका पिताजी मम्मी जी को नंबर 1 मानना है, अपने मम्मी जी को नंबर 2 दर्जा दे दिया जिस दिन, उस दिन हम जीत गए. That should be the spirit of oneself. We have one more senior member, Yasmin Gotla. She is also very senior, one of the most senior, I will say. I will request her to share her views. Gotla ji, आपका पहले वीडियो चालू कीजिए, ऑडियो. आपका आवाज नहीं आ रहा है, हाँ, your views. I will be completing 10 years of retirement now shortly. But what you are the senior most. You are senior most in our group. What Umashankar ji said was very true. You do feel that, when you are earlier, when I'd retired, I felt that, oh, now I'm not doing anything. But now, though I cannot sit in front of the laptop the whole day, that is my problem. I don't even sit, maybe 1 or 2 hours. But the fun that I get, in listening to everyone and reading everything and making a little money on the side, is great. You are making great money. Don't tell little money. You are making a great money with your strangles. That shows her humbleness. Yeah. Good. Making great money. She earns minimum 5 lakh rupees per month, but she never discloses it. At this age, one has loss to be unassuming. Loss भी इतना ही होता है ना sir, especially when I entered futures which I couldn't understand. बहुत बड़ा loss ले लिया, 2-3 लाख का loss खा गई. Actually आज मैंने webinar जो रखा था उसी पे रखा था, but now the time is already more than 12 o'clock, so I will not have that webinar. कि जो future में जो loss हो जा रहा है ना कभी-कभी, उसके लिए ये pair trading का मेरा concept लेके आया था मैं, but today is already more than 12 o'clock. So we will maybe on the next Sunday or we will do something. It was only on that one only. But I am also continually thinking कि loss क्यों होता है future में, and what we should do it कि हमको loss ना हो. मतलब हमारा क्या है कि mindset कैसे हम change करें उसको कि हमको loss वाला situation आए नहीं हमारा. That is what I wanted to discuss today, but not today now. This is almost 1 o'clock, and there is one very sad news. Would you like to hear? Yeah. What is that? The Lata Mangeshkar passed away. अच्छा, लता मंगेशकर passed. She just passed away. Just the news came there. So आगे वैसे भी मेरा थोड़ा mood वैसा हो रहा है अभी क्या इसमें because we have loved her for last I will say 60 years. At least I remember her. She was a great person. Yeah, very great lady. Very May her soul rest in peace. And she was just in front of our house only. When I was at Pedder Road, when I was a CNMD of Richardson Kuda, her house was very near to our house. So I used to every day, go from that road. I used to say, this is Lata Mangeshkar house. The Prabhu Nivas or something like that. Yeah. So she just passed away. Okay. So any suggestion for the group administration or group managing? Let us have a general thing. Or how we are commenting, how we are managing the group, or you want to say something. We are open to it. Today we will not have that formal webinar now. Yeah. यास्मीन जी को कह रहे हैं ना आप? नहीं कोई भी है. You're telling me? Then anybody want to share anything? No, I think everything is very nice, Only thing is there are so many messages that I think I read in the night, by the time I get free. Like Umashankar ji says, we do not have the time to sit in front the whole day.
So you find little time, थोड़ा prayers में करते हैं, थोड़ा cooking में करते हैं, थोड़ा social करते हैं, and then little bit of time for all this, you know. उसमें कुछ मजा आ गया तो ठीक है, you know, it keeps you young. I think most important is our brains will function better, you know, now at 70. I still want to learn something of currency trading or something. God has given us the money, थोड़ा loose भी किया तो ठीक है, you know. But my only problem is that I can't sit in front of the laptop, so I need a broker, you know, to help me. So ये currency trading में कौन broker होगा? वो you hire me, I will come and sit in your home and I will do your trade. We all are retired only. We have a full time. मेरा privilege होगा कोठारी जी मेरा. Kothari ji, actually you will not get a chance because she is already expert in equity. Now she wants to learn currency only, so I think I will get the employment first. Acha. Then you give your application first, I will be the second one. Yeah, why not? मेरा भाग्य कितना ऊपर हो गया, two experts. कोठारी जी, यार कोठारी जी, ये मैं भी रिटायर होने के बाद अभी तो अपनी सीए की प्रैक्टिस कर रहा हूँ. आपका जो यूट्यूब के लिंक्स हैं, पर्टिकुलरली जो रिटायरमेंट प्लानिंग वाले जो आपके वीडियोस हैं, जो है ना, जो आपने आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ वेयर टू पुट द फंड्स, यू शेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट. आई हैव शेयर्ड टू सो मेनी माय कलीग्स who have retired, particularly I mean my old colleagues. I retired from REC, then I was in HOCL also. I mean people are immensely benefited, और कई लोग तो वापस इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं. तो मतलब बहुत लोग हैं. I mean रियली आपके जितने वीडियोस यूट्यूब में है, बड़े खैर 2-3 घंटे के हैं, लेकिन उनको बिल्कुल टाइमिंग किस एग्जैक्टली पॉइंट पर आपकी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, मैं सबको बताता हूँ सर. पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड. इवन मेरे क्लाइंट्स को मैंने इंस्टेड ऑफ गिविंग होल लेक्चर, मैं आपको बोलता हूँ एक्सपर्ट का लेक्चर ही है ऑलरेडी यूट्यूब पे ही गो सकता. दे आर बेनिफिटेड. बहुत अच्छा लगता है सर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लॉट ऑफ पीपल उनको बेसिक पता नहीं है ऐसा अपने पैसे को कैसे हैंडल करना है. दैट पीपल डोंट नो. इवन फॉर पीपीएफ, बेसिक्स लाइक पीपीएफ, पीपल डोंट नो 1 से 5 तारीख के बीच में पैसा डालना है, क्या करना है. ये सब लोग बिल्कुल कैजुअल है इसके बारे में. नहीं, वो संगल जी क्या है ना कि अपना पूरा जिंदगी अपने मास्टर को देते थे. दैट इज अवर ह्यूमन. अपना हिंदूज में जो है ना, ये एक अपने को अपने सिखाया है कि सारा का सारा अपने मास्टर को दे दो आप. Who is your master? Our employer was our master. That's right. तो हमने सारी जिंदगी हमारी कंपनी के लिए दे दी और अपने लिए हम कुछ नहीं करते थे. वो एक बहुत बड़ा इशू है अपन इंडियंस के अंदर कि अगर हम उसके यहाँ काम कर रहे हैं. इफ आई एम वर्किंग हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आई विल गिव माय ब्लड, माय एवरीथिंग आई विल डू टू द हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एंड आई विल नेवर थिंक अबाउट माय सेल्फ. लाइफ इज चेंजिंग नाउ. वी नीड टू गिव लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू लक्ष्मी जी. और अपनी लक्ष्मी जी को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, कैसे उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जो यंगस्टर्स हैं और जितने सोसाइटी में है, उन सबको पता होना चाहिए सब जो बेसिक्स है, पैसा है. नहीं तो ये जो ग्रुप चालू किए थे उसका बेसिक आइडिया ही वही था, फाइनेंशियल अवेयरनेस का. व्हेन आई स्टार्टेड दिस ग्रुप, बिकॉज़ आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस फॉर इवन व्हेन आई एम इन HPCL ओनली. So I observed it that this is the major problem with most of the employees. So that is the reason I started this group. And then now the group has grown so much कि अभी वो financial planning तो बहुत पीछे रह गया. We have come in F&O, you come in equity, all those things. But basic अभी भी financial planning का मेरा है. So maybe I will be taking one more session on the financial planning shortly now because there are a lot of changes have come. So I will take one more session. सर मेरे उमाशंकर साहब को एक रिक्वेस्ट थी सर, कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं जैसे आपका ये करेंसी ट्रेडिंग है. Should we go through any literature or something? Because what happens even on trading on certain HDFC securities पे you need to know a lot of things. Because जैसे yesterday I found out कि my currency trading was not activated. My privileges in HDFC was not activated. So I made an application. तो ये सब छोटी-छोटी चीजें जो हैं, everybody's broker this thing also. तो आपने पीताम्बरम जी का कोर्स नहीं करने वाले हैं क्या? पीताम्बरम जी का 3 दिन. हाँ, तो उसके अंदर बेसिक्स बताने वाले हैं सारा का सारा. You can get clarification on all your basic doubts. पीताम्बरम जी will cover all half an hour for all basics only. ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकरेज कितना है, चार्जेस क्या है, उसके क्या टर्म्स कंडीशंस हैं, एक्सपायरी कैसे होता है. बिकॉज इट हैज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. अपना करेंसी का और इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है. टाइमिंग्स क्या है, पेयर्स क्या है, डिफरेंट. तो दैट Mr. Pitambram will be explained. Sir, now yeah.
Yeah, now you see, now everybody is going to come learn through some training actually. Okay. Right. Just like corporates, all MBAs comes and chartered accountants, a lot of professionals comes actually and take this internship, say like that. Okay. Where they take internship. And every corporate try to retain that knowledge and they give some stipend. Right. Even for internship also they give the stipends. So in a lighter note, in a jovial note, I would like to say, ये तो learn करेंगे. So I am going to impart training, but उनको बीच में कुछ पैसा भी मिलना चाहिए, है ना? So what I suggest, simple tips I am giving, काम करेगा, ये भी काम करेगा, लिख के ले लीजिए. I will not guarantee any return, but I guarantee your capital protections. जब 99% and 0% आएगा ना, कुछ भी नहीं करने का. पहले पेपर ट्रेडिंग, वहां भी पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए. जब 99% जाएगा तो 0% जाएगा. Suppose the amount is 74.50. Time frame, dollar amount is that time frame 67 days or your 26 days? 67 days. 67 days. अच्छा. Only 60. The dollar is समझ लीजिए 74.50. Now presently वहीं पर ही है 74.50. You take 77. 74 में 76 put and 73 call. पर बहुत कम रेट है इसमें तो. सुनिए सही. Do you see whenever the dollar, wherever it stands, the reference rate. So options, you have to seek the options, ITM options, ITM call and ITM put. You have to seek that where you get equal premium. अगर जब 74.50 का 76 ले लें, ₹1.5 होगा पुट. 73 ले लें, वो भी ₹1.5 ही होगा. अच्छा, ITM की बात कर रहे हैं. ओके. ITM, ठीक है. What you should do, जब दोनों ₹1.5 है, जब 99% ऊपर चला गया, sell 2 call options ITM, sell 1 put options, 1:2. यहाँ भी 33.33, 66.66 ही लॉजिक काम करता है. बहुत ही बेहतर काम करेगा. Let me explain that. So 99% में if we sell 2 calls and 1 put, जब call 99% always call, 0% always put. So 99% में you sell 2 call and 1 put. Now I come to this unfavorable scenario. Favorable scenario तो रोजी है, हर कोई ठीक है. Yeah, markets are booming. Each and everybody can become an expert. So what will happen when it is an unfavorable scenario? Let us analyze this. एक बार 99% चला गया, it has to be more than 90% of the 52-week high. Not clear. If it is 99%, sir, that is overbought positions, dollar. Right. It has to be somewhere near 52-week high. Am I right? Achha. So we have to ensure it is more than 90 or 95%, 52, 100, 99% strength 67 days ka aate hi. It will be more than 95% of the 52-week high. So, usko ऊपर गुंजाइश, because of the factorization of inflation, there are so many parameters involved, जाएगा नहीं. अगर चला गया, उसके ऊपर 1.71% का, जबकि 2 कॉल बेचा, 1 पुट बेचा, ठीक है सर. तो 1 कॉल एंड पुट ऑफसेट हो गया. You don't need to worry about it. 1 call extra है, ठीक है जी. So what you should do, if it goes more than 1.7%, still further, दो स्टेप जा सकता है, that's उससे ज्यादा नहीं जाएगा. So what you have to sell 2 calls, because you have to give reverse trading for that excess 1 call which is lying here and unclaimed. You have to protect that. You sell 2 calls. ITM 2 calls or 2 puts. 2 calls. ऊपर जा रहा सर, ऊपर. नहीं, कॉल तो ऑलरेडी शॉर्ट किया हुआ है ना आपने. सर 2 कॉल शॉर्ट कर दिया सर. 2 कॉल में 1 पुट शॉर्ट किया हुआ है, तो 1 कॉल एक्स्ट्रा शॉर्ट है, 1 कॉल एक्स्ट्रा शॉर्ट है. एक एक्स्ट्रा पड़ा है ना. हाँ. उसके लिए तो दिस इज प्योर सिंपल अरिथमेटिक एवरेज, सिंपल कैलकुलेशंस. जो उसको ऊपर और 1-2% चला गया समझ लीजिए, तो करेंसी ऊपर चला गया,
कॉल महंगा हो जाएगा, तभी तो कॉल में नुकसान है, दोनों कॉल में नुकसान है. पुट विल बिकम अप्रोचिंग द जीरो लेवल. ओके, व्हाट यू शुड डू, डोंट टच एनी पुट. पुट को प्रॉफिट बुक मत कीजिए. 99% के बाद 1.7% ऊपर चला गया, वहां अगेन 2 कॉल बेच दो. मैं लिख के दे रहा हूं, by the end of the month it will come down. Suppose if it does not come down, I am coming for all bad scenarios. Let us discuss. End of the month put 0 हो जाएगा. Book the profit on put. ठीक है. Call on put. एक मिनट, वहां जो आपने 2 कॉल शॉर्ट किया, उस 2 को 2 पुट अगर शॉर्ट कर दो तो क्या प्रॉब्लम है? वो पुट में तो आप यू आर ऑलरेडी इन विनिंग पोजीशन. नहीं सर, एक्चुअली सी, you are telling your winning positions. I am telling my model. That's all. Simple model. Okay. Everybody can try to apply their own methodology and find out. There is a cost involved. There is a, for every learning experience, there is a cost involved. I am putting out my things actually, which you can try. If you have better and you could be able to find out, come and share with us. But before that, experience it and share with us. There is no issue at all. तो क्या है, जब एक बार दोनों दो कॉल एक पुट भेज दिया, मंथ एंड में कॉल एक कॉल पुट को आप बुक कर दो, नेट ऑफ हो जाएगा. ठीक है, वो उसमें पुट में तो पूरा का पूरा पैसा मिलेगा, कॉल में नुकसान है, उसमें उसके साथ थोड़ा सा डीके तो होगा ही होगा, टाइम डीके, थीटा डीके. सो यू विल, सो मार्जिनली लॉस और मार्जिनली प्रॉफिट होगा. ठीक है, सो यू विल बी लेफ्ट विद 1 पुट. द नेक्स्ट मंथ पुट ऑलवेज हैज टू बी लेसर. नेक्स्ट मंथ कॉल एक्चुअली नो पुट कॉल हो गया, एक और कॉल रह गया. So if it goes above 2%, you sell 2 calls and roll over, then to sell 2 calls of the next month. Maximum 2 स्टेप जाएगा उसके ऊपर, 1, 2, 6. ठीक है, if it crashes down 2/3 of the cumulative quantity, you book the profit after 15 days. समझ ले, second month या third month में it has to reverse because balance of payment, our economy is involved, RBI is there. हमेशा सोच लीजिए, आरबीआई गवर्नर हमारा चाचा है सर, करेंसी में आएगा हमारा बच्चा का नहीं, मतलब ही नहीं बनता वो खाली बैठे तो फिनिश, एक गवर्नमेंट फिनिश हो जाएगा. ये एनडीए गवर्नमेंट या यूपीए गवर्नमेंट, कुछ भी गवर्नमेंट है, दे विल टेल द आरबीआई टू इंटरफेयर. क्या तो उनका गवर्नमेंट नेक्स्ट इलेक्शन में गया. Yeah, it is their weekly duty. Weekly duty. RBI moderation in the currency market is their utmost duty. This is the number 1 duty. Specialized departments are there over it to take care of this, because we have import payments and export receipts. They cannot compromise with that. जो गवर्नमेंट चाहे कुछ भी गवर्नमेंट है, उसमें कॉम्प्रोमाइज करेगा, अगला इलेक्शन नहीं जीत सकता. So our weight of the game is in this companies not to buy and sell dollars. See, in between, RBI will instruct companies not to buy and sell dollars. Yeah. Major players who are there, because when I was in EPCL Treasury, used to get instructions from RBI. आज dollar नहीं खरीदना है. ये कौन RBI बोलता था? No, but we are buying and selling futures only. We are not no. dealing with spots. Yeah. Sir, Ramakrishnan, what Mr. S.K. Agarwal is telling, his experience when he was in, he is my ex-boss. What Agarwal is telling, his experience when he was a GM Treasury. He is substantiating, he is vouching for me actually. When he was a GM Treasury, he used to get calls from RBI not to buy any dollar, not to buy any, sell any dollar. वो बता रहे हैं, दोबारा बताइए सर. ऐसे कैसे हो सकता है? How can RBI intervene? RBI will tell oil companies आज नहीं खरीदना है. अच्छा, मतलब just to stabilize the market, Yes. Oh. So they will tell oil companies आज नहीं खरीदना, आज मत बेचो. अच्छा. Yes, sir. We used to hedge ना, because our payment is becoming due, so I want to hedge. इसे नहीं आज खरीदना. अच्छा, अरे वाह. ये होता है सर, होता है. अच्छा. वो फोन करके बोलता है हमको. सर, ये पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है या वो गवर्नमेंट खत्म नहीं कर सकता. आप अपने एचपीसी के ट्रेजरी वाले से पूछिए, वो बताएगा आपको. नहीं, मैंने ये तो देखा था कि वो प्राइस नहीं बढ़ाने दे रहे पेट्रोल डीजल का. But I never knew that. But HPC was doing hedging. HPC also was doing hedging.
See, we all have mandate to do hedging for our future payment. Yeah. So we do hedging for a month or so, depending on the market conditions. Suppose dollar has come down, so we want to take advantage of that situation. अच्छा. So many times RBI will come and say कि आज don't buy. अच्छा. So, Verbal. We have to record this in our note. Because otherwise tomorrow auditor will ask, आपको मिल रहा था, आप क्यों नहीं लिया उस दिन? like petrol price. अभी तो सर Only verbal. सर एक्चुअली Don't मुझे rise. पता है सर आरबीआई का आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन आरबीआई का हर एक मूवमेंट मुझे पता है. अच्छा. तो मुझे पता है ये चीज बिहाइंड द सीन बैकडोर अरेंजमेंट्स होता है, अनरिटन अरेंजमेंट्स. वो क्या है, सिर्फ ऑयल सेक्टर का नहीं बताते हैं, ऑयल सेक्टर का भी बताते हैं, इंडस्ट्री को भी बताते हैं सर. वो दे हैव टू सर अपना कुर्सी बचाना सर, अपना कुर्सी बचाना. But this I never knew. अच्छा ऐसा भी होता है. तभी तो क्या, तभी तो सर करेंसी इज फार फार सेफेस्ट. मैं तभी तो मैं आरबीआई गवर्नर को हमेशा मैं चाचा बोलता हूँ. मेरा पिताजी का यंगर ब्रदर है, वो मेरा हमेशा साथ खड़ा रहता है. तभी तो मैं खुशी खुशी खेलता हूँ. आई नेवर से करेंसी इज ए ट्रेडिंग, आई ऑलवेज से करेंसी इज ए प्लेइंग. सर आप है ना सर, स्ट्रेस पूरा स्ट्रेस लगा के अगर कमाएंगे तो वो लक्ष्मी आएगा तो सही, तो फिर बीमारी के रूप में जो हॉस्पिटल में चला जाएगा. वो लोग बैठे हैं, वो एक्चुअली वी हार्वेस्ट थ्रू करेंसी मार्केट, दे विल हार्वेस्ट अस टू टेक आउट द मनी फ्रॉम अस एक्चुअली. बट मजे से कमाएंगे, खुशी से कमाएंगे, चाहे कुछ भी हो, तो लक्ष्मी घर में ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी. राइट. एक दो साल करेंसी में अगर खेलेंगे ना सर, आई नेवर से दे डोंट प्ले इक्विटी या कमोडिटी. वो एक्स्ट्रा मनी है, वहां से मिल जाए तो कहीं से भी अच्छा है. जो इसी मनी हैज टू कम इन ए एथिकल वे. ठीक है सर, कहीं से भी आए, व्हाई शुड यू नॉट रिसीव इट एक्चुअली. एथिकल वे में से कहीं से आए तो अच्छा है ना सर. हाँ वो तो बात है. बट ओनली थिंग इज moral of the story, we have to seek the money. कोई पाप नहीं है, but it has to, we have to seek through an ethical way. That's all. Nothing more than that. Ethical and systematic way. हाँ, एथिकल में अगर आप लेना शुरू कर दिया ना तो सिस्टमेटिक तो करेंगे. पता है क्या, वो सिस्टमेटिक नहीं है, आपको आएगा नहीं. डिसिप्लिन, सिस्टमेटिक, रूल बेस्ड, साइंटिफिक. Right. What is wrong in that getting money? So I never say, वो कई लोग बोलते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है. मैं तो कहता हूँ पैसा सब कुछ है. पैसा ही सब कुछ है. पैसा के बिना ये सिर्फ बोलने के लिए. अरे एक्चुअली ना, आई एम टेलिंग एक्चुअली, इफ दोस पीपल हु सेज ना पैसा सब कुछ नहीं है, दे आर इनफिडेल्स. या Because they are not putting their effort to go after Lakshmi. You have to go after Lakshmi in a very, very ethical way, तो लक्ष्मी घर पर ही रहेगा. If you don't try, मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है. My father used to say, Uma, two things. My father said a lot of things actually. He used to say two things. Either you live within your resources or increase your resources. Which way you want? I said, I don't want to live within my resources. I will go for the second one. I will increase my resources. क्या बात है ना सर. अगर हर कोई विद इन द रिसोर्सेस अगर जीना शुरू कर दें, आई एम टेलिंग द ग्लोबल इकोनॉमी विल कम डाउन. सब अगर दाल रोटी खा के बैठ जाएंगे सर, कहाँ से इतना एक्टिविटीज आएगा. हमारे बच्चे का अनएम्प्लॉयमेंट, वो भी दाल रोटी का हम खाने के बाद उसमें पानी डाल के उनको देना पड़ेगा. है ना. The entire world economy is growing because of that demand and unsatiable human beings. Actually, human beings are unsatiable animals. Yes, that is why people are being called social animals. So actually, instead of telling all these things that ठीक है पैसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए. Beyond everything, actually, you have to put your effort, put a hard work. If it comes to ethical way, why not? सही बात है. ऐसे सोच लिया होता तो अंबानी जी अभी वो 3 लाख लोगों को नौकरी थोड़ी दे सकता है सर. कौन अगर हर एक सोच लिया होता, मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी अंबानी इतना बड़ा एम्पायर खड़ी कैसे कर सकता है.
नहीं ये उमाशंकर जी जो मैंने ट्राई किया लास्ट आई विल से अराउंड 20-25 डेज में, करेंसी ट्रेडिंग हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. एक भी ट्रेड में मुझे लॉस नहीं हुआ अभी तक. Although I was taking at a very low level, not like you, I was trading with only one lot, but कभी भी लॉस नहीं हुआ मेरे को. Every trade is giving me money. That is what I say. जबकि इक्विटी में नहीं है. इक्विटी इज रियल हॉरिबल है. ऑपरेटर्स वहां पे मतलब क्या कार्टल और क्या क्या नहीं चलता उधर. करेंसी में इशू ही नहीं है. मैं आईटीएम बता रहा था. करेंसी में बिगेस्ट बेनिफिट इज दैट आरबीआई इंटरवेंशन. हाँ, that there is one super body which is always monitoring and ensuring that currency does not go out of control. Right. जो कि इक्विटी में नहीं है. ऐसा नहीं है, but RBI इधर तो every time he will keep monitoring. If excess flow is there, it will buy. If supply is short, he will sell. He will keep some equilibrium so that it does not move beyond 5% range, 5 to 7% range. RBI में every week there are two policies. One is sucking out, another is flushing out. जब बहुत ज्यादा जो ये करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा है, तिजोरी खोल देगा, तिजोरी खोल देगा. इतना सड़क में ऐसे डॉलर आ जाएगा तो डॉलर सस्ता हो जाएगा. डिमांड ही नहीं रहेगा डॉलर. Those demand supply always situations they moderate actually. I want to learn this thing. I want to learn this controlled through RBI. All major transactions when you buy from market or you are taking loan, all that is going through RBI. So RBI knows what is the position which is prevailing in the market, when the money is going to come. Correct. So that is how they keep controlling. But Agarwal ji, despite the RBI continuous intervention also, as per Mr. Umashankar ji also, many times, we may enter into that MTM loss position. So we may not be able to exactly judge, the movement of currency. See, what I am saying is that you will not have more than 10% movement in that currency, unlike stock market where it can be 30%, 40% in an individual stock. Dollar will never fall or go in by 20%. Okay. मैंने बताया ना राम, मैंने 5 साल का डेटा निकाला. मैंने लास्ट 5 ईयर का मैंने डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो एवरीडे का निकाला. एवरीडे का हाई एंड लो ऑफ द करेंसी मैंने निकाला उसका, और 5 ईयर का उसका एवरेज किया. यू विल नॉट बिलीव द एवरेज केम टू 31 पैसा. मतलब कि एवरेज डिफरेंस बिटवीन हाई ऑफ द डॉलर एंड द लो ऑफ द डॉलर इज ओनली 31 पैसा ऑफ लास्ट 5 ईयर डेटा. Daily variation. Every year it will depreciate by 52 week high low भी इतना ही रहेगा सर. 52 week high low, it may not be more than 6 to 8%. That's all. तो मैं वही तो बता रहा हूँ. It is so safe. 31 पैसा कोई अगर चीज मूव कर रहा है एक दिन के अंदर, तो आराम से 5 पैसे में तो आप आराम से मतलब जो है प्रॉफिट बुक करो सर आराम से. मिस्टर रामकृष्ण practically has seen it. He has taken euro along with me. Let me use the word along with me. Along with me. इतना रेड में चला गया था. सर चिंता मत करो सर, आएगा सर. वो मुझे कई बार बोलता था, यार यू आर द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड यू आर पेइंग फॉर मोर नोशनल लॉस. मैं बोलता हाँ सर, मुझे और नोशनल लॉस चाहिए. मैं हमेशा भगवान को, जितना नोशनल लॉस ज्यादा आएगा उतना ही मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा. In fact, I suggested to Umashankar ji that the group name should be changed to Rejoice when MTM loss is there. Because that concept is very difficult to understand. Normally our entire BP goes in only MTM losses. At the end of the expiry, you may even gain. But the MTM losses bring so much of blood pressure to one in equity. Right. But here it is exactly the ulta. Umashankar ji, you are explaining some procedure now. Can you make a write-up and send it to the group? Yeah, I can send it to the group, no problem. It's very simple, very simple. Actually, again, I will give a write-up you have given that must be gone through. Some people would have missed it. On that RTTM and that percentage, one write-up you had posted. I will send so that is fairly, descriptive write-up, and only patiently we have to go through it, understand. Yeah. Then we should actually,
Again I am telling, actually we are little bit deviated, no problem. Actually, see, when it is 99% and 0%. Zero is putting the things down. Actually, it is put. We have to take 1.5 rupees more and 1.5 rupees less of the ITM. Okay, call. When it is 99%, we have to sell 2 call and 1 put down the line, 1.5 rupees. Though premium should be as far as possible both होना चाहिए. ठीक है. When as far as possible वो होना चाहिए, उस मंथ का कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, वो आप ईयर आप ले लो जितना नजदीक हो सके. सेम हो गया तो बेस्ट है. जैसा 74.50 अगर डॉलर मिला, ब्यूटीफुल इक्विलिब्रियम, तो तुरंत 74.50 है तो 76 का कॉल भेज देने का, 73 का पुट भेज देने का ITM, दोनों पुट. बिकॉज मैं आई नेवर ट्रेड बाय कॉल एंड पुट. 14 पैसा 12 पैसा रहेगा सर. क्या फायदा है वो करने का. एक्चुअली आउट ऑफ द मनी कॉल, OTM कॉल एंड पुट, 14 पैसा 15 पैसा. सर मेरा जिंदगी बाकी कम है सर. मैं जितना जल्दी हो सके मैं करोड़ों रुपया मैं हटपना मार्केट से. मैं अभी कॉल एंड पुट में OTM में कॉल एंड पुट में करते रहे. तो मैं आई बॉर्न इन पंडित फैमिली. आप बेसिकली मेंटली बाय थिंकिंग आई एम अ पक्का मारवाड़ी. तो पैसा क्या वही है ना सर. नहीं, यू आर डिस्प्लेसिंग माय पोजीशन. Certainly sir. और क्या, I have to go full speed. पता नहीं मेरा टिकट कब है. I don't know about it actually. इस बार बस थैंक गॉड फोर्सिबली जो टिकट दे रहे तो पूरे इंटरनेशनल लेवल में मैंने लिए नहीं. वो नो व्हाट विल हैपन, नोबडी नो, ओनली ऊपर वाला जानता है. ठीक है, इसलिए बढ़िया है. ITM पुट ITM कॉल बेचो, ऑलवेज द विनर. लिक्विडिटी कैसा है इसका? लिक्विडिटी है क्या? लिक्विडिटी है उसका डॉलर में सर. आप पैसा दीजिए सर, आपका खाते में $1 लाख में वो डाल देता हूँ सर. अच्छा, एग्जीक्यूट कर दूंगा. ओनली जापानीज येन अकाउंट में मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा सर. $1 लाख आराम से जाएगा सर अंदर. अच्छा. ओनली इन USD. तो क्या करना है, 2 कॉल भेज दिया, 1 पुट भेज दिया. 1 कॉल एंड पुट तो ऑफसेट हो गया, 1 कॉल बचा है. जब मंथ एंड आ गया, रोल ओवर, मार्केट ऊपर ही जा रहा है, समझ लीजिए पुट का प्रॉफिट बुक कर लीजिए. कॉल एंड पुट दोनों प्रॉफिट बुक. एक कॉल को खाली छोड़ दो, है ना. एक कॉल को रोल ओवर कर दो अगला महीना का ई रेट पे. इफ इट इज मोर देन 2.% ऑलरेडी द करंट मंथ हैज पास्ड ऑन द हायर साइड, another you sell another 2 calls. There you sell 1 put. Same ITM, another 2 calls and 1 put. ये वापस आएगा, जबरदस्त देगा. अगर पुट बेचे नहीं भी बेचेंगे ना सर, इफ यू आर रेडी फॉर टू स्टेप्स, 1 कॉल बेचा और 2 कॉल बेचा और 2% गया, इससे ज्यादा जाएगा नहीं है सर. जाएगा तो हमेशा आप सोचते रहिए, इससे ज्यादा गया तो सिंगल थंब रूल. जब भी अगर 5% ऊपर चला गया, बेचना शुरू कर दो. नीचे 5-6% नीचे चला गया, यू हैव टू इंश्योर ओनली इफ इट इज अबव अपसाइड मोर देन 95% में होना चाहिए. 99% का 0% होना है. 99% का परसेंटेज स्ट्रेंथ होना चाहिए. 95% ऑफ द 52 वीक हाई को नियर होना चाहिए. लाइक द डाउन साइड में 0% होना चाहिए एंड 90% ऑफ द 52 वीक लो का नियर में होना चाहिए. और ये जो परसेंटेज स्ट्रेंथ आप इसमें निकालेंगे, ये स्पॉट रेट पे या फ्यूचर के रेट पे? सर ये परसेंटेज क्या है? 0% ओनली फ्यूचर. फ्यूचर का रेट तो कोई मिलता ही नहीं है, वो तो मुझे डेली अपडेट करना पड़ेगा. हाँ, वो that manually he controls. Manually managing sir. आपका डेटा चाहिए मैं दे देता हूँ. डेटा है ना सर, कल तक का डेटा है, मैं एक्सेल शीट भेज देता हूँ. आगे से आप लोग मेहनत कर लीजिए, आप डाल दीजिए ना. 4 एंट्री ओनली क्लोजिंग रेट ओनली. कितना टाइम लगेगा सब? 5-10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा. You want everyone to be so active like you. That's the problem. नहीं, we have experts है यार. शंकर जी, ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है? 0% या 99, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए आप क्लास अटेंड करो मिस्टर पिताम्बरम जी की क्लास अटेंड करो, आपको वो आ जाएगा सब. हाँ, वो भी बता देगा. मैंने रजिस्टर किया है. हाँ, बस तो वो आपको अच्छे से समझाएंगे. डोंट वरी. वो नेक्स्ट संडे को बड़े अच्छे से समझाने वाले हैं अपने को. पीताम्बरम जी ने एक एक्सेल शीट भी बनाया गूगल फाइनेंस शीट में से. अगर वो आप उनसे लेके डाउनलोड कर लीजिए, तो भंडार है पीताम्बरम जी का. जो वो इक्विटी के लिए बनाया है. तो सेम चीज वो भी काम करेगा ना. वो सेम ही है ये. हाँ, सेम. राइट.
Understood. That is Google. That is Google sheet. आपको सिर्फ सिंबल चेंज करना Online. है, सिर्फ सिंबल चेंज करना है, इक्विटी की जगह आपको USD INR डालना है, तो आपको वो वाला रेट करेगा। बट प्रॉब्लम गूगल शीट में ये है कि वो सिर्फ स्पॉट रेट ही देता है, वो फ्यूचर का रेट नहीं देता वो। नहीं, गूगल शीट, नो PKG, गूगल शीट में करेंसी सेपरेटली है। व्हाई डू यू नीड टू चेंज? नहीं, व्हाटएवर गूगल शीट। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर जो है ना, वो जैसे अपने इक्विटी के अंदर ओपन, हाई, लो, क्लोज सब आता है ना, वो गूगल फाइनेंस के अंदर करेंसी का नहीं आता है। करेंसी का वो एक ही रेट देता है बस, वो चारों रेट नहीं देता है, वो ओपन, क्लोज, दैट इज ऑनलाइन स्पॉट रेट, व्हाटएवर इज स्पॉट रेट। स्पॉट रेट देता है, ओनली स्पॉट रेट देता है, वो भी इंटरनेशनल मार्केट का। इंटरनेशनल मार्केट में वहां पे क्या हमारा रुपी ट्रेड हो रहा है, रुपी वर्सेस USD INR क्या ट्रेड, वो वाला रेट अपने को देता है। तो वो रेट और अपना इंडियन का रेट दोनों लिंक नहीं है, वो प्रॉब्लम। तो दूसरा प्रॉब्लम है वहां पे आपको सैटरडे संडे का भी रेट मिलता है। हाँ, अच्छा, ओके। स्पॉट में आपको सैटरडे संडे का भी रेट मिलता है, तो नंबर ऑफ डेज चेंज हो जाता है आपका। करेंसी यूएल शीट का प्रॉब्लम है, तो वो इंटरनेशनल रेट मिलता है, लेकिन उसमें IBR नहीं मिलता है, बिकॉज इंटरबैंक रेट नहीं मिलता है। इंटरबैंक रेट नहीं मिलने की वजह से, एंड एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वाइड डिफरेंस बिटवीन द फ्यूचर्स एंड स्पॉट। उमाशंकर जी, रिक्वेस्ट ये है कि आप अपना वाला वो शीट भेज दो जो आपने अभी तक बनाया, उसको आगे हम अपना अपडेट कर लेंगे। बस वो ठीक है। उमाशंकर जी, अगर हम फ्यूचर में, उमाशंकर जी ग्रुप लीविंग करने आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्या आ गया सर, समझ लीजिए सर। अरे अभी वो व्हाट्सएप का प्रॉब्लम है। नहीं, अभी व्हाट्सएप का प्रॉब्लम है। व्हाट्सएप ये बोलता है अगर आपने ग्रुप छोड़ा है तो यू कैन नॉट जॉइन बैक द ग्रुप अप टू 24 और 48 आवर्स। वो प्रॉब्लम हो रहा है। एंड आई आल्सो आई कांट ऐड हिम आल्सो। जब मैं ऐड करता हूं तो वो दिखाता है कि द पार्टिसिपेंट हैज लेफ्ट, नो यू कैन नॉट एड इट अगेन। ठीक है ना सर? अच्छा, ये भी अच्छा है सर, ग्रुप बना लीजिए ना सर। ये भी एक सबक है सर। मैं आगे छोड़ने से पहले सोचूंगा ना 40 आवर्स में मैंने क्या करना है। जॉइन बैक। व्हाट्सएप बोलता है 2 दिन वेट करो। सही है ना सर? वो भी डिसिप्लिन्ड है। सो वी हैव टू अवॉइड बाय दोस रूल्स। ठीक है ना? आगे अगर मैं कभी भी सोचूंगा ना, मेरे दिमाग में अच्छा हो गया आपने बता दिया, मैं बहुत सोचूंगा यार मैं छोड़ दिया तो 48 घंटे में बोर हो जाऊंगा। मैं एक्चुअली बेटर स्टिक अराउंड है ना। नहीं, इनके साथ मेरा बहुत बढ़िया वो हुआ। जैसे ही इन्होंने ग्रुप छोड़ा, मैंने इनको फोन किया एंड ही वाज नॉट पिकिंग अप माय फोन, तो आई न्यू ही इज इन रियल एंगर। सेकंड डे से ही स्टार्टेड कॉलिंग मी, तो मुझे लग गया कि अभी इनको बेचैन हो रहा है काफी ज्यादा, नॉट एबल टू रिमेन विदाउट आवर ग्रुप। तो दैट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी। अच्छा, फैमिली के साथ ऐसे ही होता है सर। उमाशंकर जी, ये जो हम की बजाय अगर हम करेंसी में डिलीवरी बेसिस पे लाइक, तो वो करेंगे के लिए भी बाई एंड सेलिंग के लिए वो पिरामिडिंग इज द ओनली ऑप्शन, या डिलीवरी नहीं है ना उसमें? यानी स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस? No. There is no actually. You see, we are basically traders actually, and making money out of the currency derivatives. That is future. So if you go into the spot, you can do it, but you have to stack in your almirah. कितना खरीद कर रखेंगे सर? यू हैव टू गिव द ओरिजिनल 100%। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। 2000 में आप एक पूरा लॉट $1000 ले रहे हैं। $1000 अगर पार्ट में जाके खरीदेंगे, यू जस्ट कैलकुलेटेड अबाउट 75,000 रुपीज, 80,000 रुपीज आप देना पड़ेगा ना सर। इसके लिए अगर हमें जैसे एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो हमें उसका लॉट मैंने सबको म्यूट किया है। यू हैव टू अनम्यूट एंड स्पीक नाउ। आई हैव म्यूटेड एवरीबॉडी, सो प्लीज अनम्यूट एंड देन स्पीक। उसके लिए हमें लॉट को, जैसे हमने एक लिया और अगर थोड़ा सा भी 0.5 यानी 5 पैसे या 10 पैसे कम हुआ तो 2 लॉट और खरीदने चाहिए। पिरामिडिंग सिस्टम से परचेज करते जाएं। और जैसे no. I am coming out with my module. Just now I have shown. Strictly I have to go. That's all. There is no question is actually will be attended. I simply go according to that. Over the period of time, you will come to know everything, sir. Okay, thank you. नहीं भाटिया जी, वो मॉडल मैं यूज कर रहा हूँ। जो आपने बोला है ना, जो आपने जो बोला है, that model I am using it, but because I am continuously in front of the screen, so I am able to book the profit. So if you are continuously from 9 o'clock to 5 p.m. In front of the screen, then you can use it. Otherwise, you have to use Mr. This Umashankar's model.
Okay. Otherwise means we can, continuously keep on buying if the rates are going down and continuously keep on. Yeah. You can do it, but then you have to book the profit also very early. You can't keep on holding like that. तो वो एक डिफरेंट मॉडल है, और जो उमाशंकर जी बता रहे हैं वो एक डिफरेंट मॉडल है. उमाशंकर जी बता रहे हैं कि जब भी 0% आएगा और 99% आएगा तो हमको खरीदना और बेचना है. अपन जो मॉडल देख रहे हैं वो डेली वेरिएशन वाला कर रहे हैं. मैं भी वो डेली वेरिएशन वाला कर रहा हूँ, तो उसमें पैसा आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बोथ आर डिफरेंट मॉडल. और सर दूसरा जो ये प्राइस आता है यूएस डॉलर और आईएनआर का, वो इन एनी केस होता भी मतलब फ्यूचर ही डेट है, लाइक हफ्ते के बाद वाला, नेक्स्ट फिर एक और हफ्ते के बाद वाला, फिर नेक्स्ट, ये इसी तरह के रेट्स आते हैं अलग अलग. तो हमें वीकली और मंथली है, उसमें वीकली ओनली मंथली. मंथली तो अभी फरवरी वाले में 24 फरवरी का मंथली है, और बाकी जो 4 आ रहे हैं वो सब वीकली वाले हैं. अपने वीकली वाले में नहीं करना है, तो वीकली वाले में लिक्विडिटी नहीं है, फंस जाएंगे. फंस जाएंगे. यूएस डॉलर में भी लिक्विडिटी नहीं है. अच्छा, तो इसको मतलब 2 रेट आते हैं, एक मंथली आता है, एक वीकली आता है. बता रहा हूँ कि जो मंथली है वो लास्ट ट्रेडिंग डे से 2 दिन पहले वाला जो होता है मंथ का. तो जैसे फरवरी में जो लास्ट डे है उसके 2 दिन पहले वाला जो डेट है दैट इज द मंथली. तो इस महीने में 24 फरवरी का जो है मंथली डेट है. अगले महीने में शायद 29 मार्च का जो है वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, और बाकी जितने भी जो डेट आ रही है वो सबके सब वीकली ट्रेड है. पिताम्बरम जी मैं सही हूँ? पिताम्बरम जी एम आई राइट? राइट सर, बिल्कुल राइट. एक्सपायरी जो फ्यूचर का जो एक्सपायरी डेट है दैट विल मैच विद द ऑप्शन का एक्सपायरी डेट, दैट इज द मंथली. वो तो बराबर है, वो बराबर. तो मतलब वी शुड ट्रेड इन मंथली ओनली. हाँ, वी शुड ट्रेड इन मंथली ओनली. अच्छा, इसमें दूसरा एक और है, एक सीडीएस रेट होता है और एक बीडीएस रेट होता है. तो अपने को सीडीएस वाले में काम करना है, बीडीएस वाले में काम नहीं करना है. लास्ट थर्सडे ही होता है क्या? सीडीएस फॉर एनएसई एंड बीडीएस है दैट इज फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. तो बीएसई वाला इतना लिक्विड नहीं है, तो वी विल ऑलवेज ट्रेड इन सीडीएस. ओके, ठीक है. थैंक यू सर. पता नहीं लास्ट थर्सडे होता है एक्सपायरी? नहीं, 2 दिन पहले के लास्ट वर्किंग डे के 2 दिन पहले वाला दैट इज द एक्सपायरी. पिताम्बरम जी एम आई राइट? या हाँ, मतलब जैसे ये महीने के जो लास्ट ट्रेडिंग डे है उससे 2 दिन पहले वाला. और दूसरा ये कि 12 बजे एक्सपायर होता है. अपने एनएससी में अपना जो इक्विटी में तो शाम को 3:15 बजे एक्सपायर होते हैं, सारे 3:30 बजे होते हैं. करेंसी के अंदर 12 बजे एक्सपायर होता है. सर एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये आईटीएम ट्रेड्स में व्हाट इज द बेनिफिट व्हिच आई हैव अचीव्ड एंड व्हिच आई हैव एक्सपीरियंस. एक्चुअली आई एम डूइंग इन माय सन्स नेम एंड माय डॉटर इन लॉस नेम आल्सो. जब आईटीएम बेचेंगे तो इन ए ईयर you will get around 7 to 14 times, 7 long and 7 short, that is 14 times मिलेगा. अपसाइड एंड डाउन साइड दोनों साइड में प्रॉफिट मिलेगा. तो ये तो पहले कभी भी नहीं बताया, ये आपने आईटीएम वाला कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं बताया आपने हम लोगों को. आज पहली बार बता रहे हैं. अरे सर, लोगों को मैंने बताया, कुछ ऑलरेडी स्क्रीनशॉट भी लोग डाला ना, खरीदा ना. अच्छा, बेचा ना. तो आप तो हर बार वो जो है फ्यूचर ही खरीदने के लिए बोलते थे. फ्यूचर में इसलिए खरीदने के लिए बोल रहा था, एकदम ऑप्शन में एकदम जो फ्यूचर है एवरीबडी नोस एक्चुअली. इक्विटी बेस्ड करके थोड़ा सा नॉलेज, ऑप्शन में स्ट्रेट अवे में बोल दो एक्चुअली दिक्कत हो जाता है इसलिए. अच्छा. लेकिन ऑप्शन में भी पब्लिक बेचे हैं, पैसा भी बनाए. अच्छा, इट्स नॉट लाइक दैट. तभी तो मैं जब आपके साथ जो इनफैक्ट वी स्टार्टेड विद दैट ओनली इन द मंथ ऑफ नवंबर, बट देयर आफ्टर ऑफ कोर्स द हाउ इज योर एक्सपीरियंस? No, he had put it in the group only. In the month of November, we started with CE 74 and P 76. We made some small money, 3,000, 4,000 rupees. After that, of course, the focus was more on future only. But that options currency options the strike selection is still, a little dicey. That unless Mr. Umashankar clears it, because it is not very clear, because that premium should be more or less same, and then that. But in the last 2 months, I don't recall any option trading in currency. Only futures we are doing. So, what I mean to say, at the 99 and 0%, 3-4 things. One is 99%. We are number one. Number two, we have to choose the calls. Yeah. Then that equilibrium between the call and put should be try to be maximum. We have to try maximum to be जितना लेस है बढ़िया है. समझ लीजिए जो कॉल का 1.5 रुपया प्रीमियम है,
₹1.40 प्रीमियम है तो कोई दिक्कत नहीं। ₹1.40 से 40 पैसा से ₹1.5 तक अगर प्रीमियम है तो बहुत ही बढ़िया है। ₹1.5 ऑन द डॉट। अभी पिछले महीने मैंने ऑन द डॉट, अभी स्टिल आई विल पोस्ट माय थिंग्स एक्चुअली, माय ऑप्शंस का ₹1.5 1.5 to 1.53 बराबर मिला मुझे, भेज दिया दोनों 10-10 लाख भेज दिया। बट आई एम डूइंग इन माय अकाउंट लिटिल बिट, बट we will get 7 downs and 7 ups in a year, average. I am not giving a perfect number. You can make, अगर किस्मत, मुझे तो किस्मत नहीं मिला, एक बार 99% जाने के बाद बार बार वापस आ गए, 2 या 3 बार मिला, मैंने डबल भेज दिया, ठीक है। we can make 2-3 lakhs every month. आप तो ऐसा नंबर बोल रहे हैं ना कि Sir, I am telling you, but 100 lots I am playing, 100 lots. So 100 lots सर, हिम्मत होना चाहिए, क्योंकि मेरा अंदर हिम्मत इसलिए, मैंने इतना घवा के सीख के मैं कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस हो गया इसलिए कर रहा हूँ। बट दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, पेपर ट्रेडिंग ही तो करना है ऑप्शन में भी, जो मैं बता रहा हूँ। व्हाई नॉट 10 लाख सर, वो 100 लाख में करो ना पेपर ट्रेडिंग में, क्या फर्क पड़ता है? 2-3 महीने करके देखो, पता चल जाएगा। यू डोंट नीड टू वेट फॉर थिंग एक्चुअली, देन यू विल स्टार्ट गेटिंग द स्टाइपेंड फॉर अटेंडिंग माय मॉड्यूल। मैं चाहता हूं मैं जैसे कॉर्पोरेट टाइप का ये रन करें, जो स्टाइपेंड मिले सबको, अच्छा कैसा मिले। कॉर्पोरेट में 10,000 दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ भैया मैं अपना जो छोटा सा शेयर करके 1-1 लाख 2-2 लाख मिले तो नेचुरल और लोग पढ़ने आएंगे ना, अच्छा तो ग्रुप में तभी तो कह रहा हूँ। तो पेपर ट्रेडिंग टीम मैंने कर लीजिए, आ जाएगा पैसा। Uma, I would like to share that the option trading that we did in January. Yeah. Kothari ji, welcome sir, Muralidhar ji, आइए sir, welcome sir, I was really। अरे आप कहाँ थे मुरलीधर जी, आप तो आते ही नहीं कभी ग्रुप में। नहीं, मैं ग्रुप में ही हूँ, मैं सुन रहा था सब कुछ। अच्छा बोलिए। Actually, on 7th of January, we took an option trade. We sold 73 call option, we sold 10 lots. 76 call option, we sold 10 lots. I think the rate was somewhere in between. That time it was around 74.50 or something like that. 74.50. Yeah, 74.50. Yeah, on the dot. And we sold 73 call option at 1.48, almost near 1.50, and 76 put option at 1.53. And in the call option, we covered on 14 January in 1.23, giving a profit of 2,500 for 10 lots. And the put option reduced to almost 84 paise on 27 January, giving a profit of 6,900. दोनों में कमाया and the profit was 9,400 on an investment of how much of money? 20 lots. 20 into 3, 60,000. 60,000 you have earned. No, sir. When you short call and as well as put, one will take 1,700 rupees, another will take only 800 rupees. Okay, fine. 2,500 into 20. Yeah, that is about 50,000 rupees. On 50,000, you have earned 9,400. You can calculate the percentage return. यही महिमा है सर। 99% 0% में खेलेंगे ना, कोई मॉडल मेरा मॉडल का भी जरूरत ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ। so, मैं अपने ही मॉडल को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में। फैंटास्टिक, ये तो मॉडल और भी कमाने के लिए। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग इतना बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, तो उसी में सारा पैसा आ जाता है। जब 0% में अगर आप करेंगे तो ऊपर जाएगा, उसके बाद जब ऊपर जाएगा व्हाट विल हैपन, ऊपर जाएगा कॉल इंक्रीज होगा, फुट नीचे चला जाएगा। फुट जितना है तो 0% में तो नेचुरली 2 फुट बेचेंगे ना, वो पूरा फुट आ जाएगा, छोड़ जी लास्ट तक फुट आ जाएगा। कॉल जहां भागना तो भागने दीजिए ना, उसको वापस उसको बुक करके अगले महीने में ट्रांसफर करो, वहां 2 कॉल बेच दो। समझा। हाँ, 2 कॉल बेच दो, 1 फुट बेच दो, उसके क्या कॉल का मात्रा बढ़ा रहे हैं। अब क्या है, 1 और फुट, 1 कॉल ऑफसेट हो गया, 2 कॉल ओपन है और 2% ऊपर गया और 4 कॉल बेच दो सर, आएगा सर। तो मैं लेट मी बी वेरी फ्रैंक, थोड़ा सा मैं सिंपल वे में, तो उनका पिक्चर भी आएगा, जैसा बोलते हैं ना तो पिक्चर में मेरा करण अर्जुन आएगा मैं हमेशा बोलता था मेरा करण, पूछते हैं उमा ऐसे हो गया सर, चिंता मत करो मेरा करण अर्जुन आएगा। मजे से मैं पैसा बना रहा हूँ सर। उमा सर, जी सर। उमा सर,
सर जो नया हम लोग कॉल ओपन करेंगे वो पुराने स्ट्राइक पे ओपन करेंगे या अभी जो करंट प्राइस चल रहा है उससे 1.5 के डिफरेंस पे ओपन करेंगे? नहीं वो जब जीरो वाला तब करना है ना, जीरो या 99 वाला तब करना। मैंने पोजीशन ओपन कर लिया, सपोज सर मैंने 74.5 था, मैंने दोनों पोजीशन ओपन कर लिया। 73.5 आपका कॉल, 76 पुट। अभी ये बढ़ के 76 चला गया, मैं वहां पे पुट में मुझे प्रॉफिट आ गया। अब जो नया कॉल जो हम एवरेजिंग कर रहे हैं वो 73 क्या करेंगे या 74.5 पे अब कॉल हम एवरेज करेंगे? सेम जो कॉल बेचा उसी में यू हैव टू बी एक्टिव विद इन द कॉल ओनली। ओके, स्ट्राइक सेम रखना है सर। सेम स्ट्राइक। नहीं, बट 76 जाने के बाद में 73 का तो बहुत हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा आईटीएम हो जाएगा। नहीं, that will complicate the things. We try to be very simple in arithmetic. मैं अपने आप को मैं सोचता हूँ, मेरा दिमाग ही नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा वो सिंपल सेम ऑप्शंस का स्ट्राइक प्राइस ही मैं डील करता हूँ। तो 76 जाएगा तब भी 73 करोगे सर? एक्चुअली जब ऊपर का 76 का कॉल भेज दिया, 73 का पुट बेचा, उनके कहने पे। No, that 73 and 76, how do you choose, sir? That is based on equal premium. If you go for equal premium, now the strike rate automatically you will get it. Okay. नहीं, so that is वो जो बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि जब आपने 74.5 था स्पॉट का रेट, तो आपने 73 का पुट बेचा और 76 का आपने कॉल बेचा, बराबर है? हाँ, वो 1.5 रुपए प्रीमियम आ जाएगा। 1.5 रुपए। अभी मान लो रेट 76 आ गया, तो क्या करोगे आप? तब कौन सा वाला बेच, क्या स्ट्राइक लोगे आप? वो एक मिनट, जो 76 आ गया हमारा पुट का पूरा प्रॉफिट मिल गया। हाँ, वो बराबर है। हाँ, वो बराबर है। तो 76 का कॉल का क्या है ना, 2 और बेचने का ऊपर खत्म। नहीं, कोई 76 का या आगे के रेट का ये बोल रहे हैं? No, 76 का ही स्ट्राइक है। और नीचे पुट का तो बेचना ही नहीं है। ओके, बेचना ही नहीं। दूसरी बात है, 76 बेचने से क्या है ना सर, वहां पर ज्यादा होगा, कॉल का प्रीमियम और बढ़ गया होगा, 1.5 रुपया 3 रुपया होगा। वो तो एटीएम हो जाएगा ना, तब तक एटीएम हो जाएगा। 1.5 रुपया प्रीमियम 3 रुपया हो गया होगा। तो क्या हुआ, तो ऑलरेडी मार्केट के हिसाब से, फ्यूचर के हिसाब से 2% आ गया ना, अचीव आ गया ना, मोर देन 2% यू आर गेटिंग इट ना। नाउ यू हैव टू सेल इट ट्वाइस द क्युमुलेटिव क्वांटिटी, दैट्स ऑल। 3 हो जाएगा। जब वापस आ जाएगा टाइम डी के, मार्केट रिवर्स हो गया, तो 2/3 ऑफ द क्युमुलेटिव क्वांटिटी बुक द प्रॉफिट एंड 1/3 यू लीव इट फॉर फर्दर डीके, दैट्स ऑल। सिंपल सर, ज्यादा कैलकुलेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं समझ 2-2 लाख आराम से बना सकते हैं सर। व्हाट, प्रैक्टिस करें तभी 100 लाख 100 लाख तक कोई नहीं करेंगे। मुझे लगता है मुझे इक्विटी का अकाउंट बंद करना पड़ेगा। बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट तो सिंपल लग रहा है ना। Kothari ji, the percentage return in currency trading, at least as I see it, is minimum 4% per month. हाँ, तो बोलिए इक्विटी में नहीं आता इतना। वही basic, and equity, the struggle, the kind of volatilities you have in the market, it's something mind-boggling. Whereas in currency, it's quite peaceful. I mean, it's, in fact, currently, at least for me, I don't take as many trades as or as many lots as Umaji does, but I also do. Sometimes even I hold. You ask him, at one time in Euro, we were holding on almost 160, 180 lots actually. I went up to 450 lots. Yeah, he went up to 450 lots. I was up to 180 lots that time. And he was incurring around more than 2 lakhs. I was incurring around 8 lakhs. Loss. Notional loss. Lakhs, yes. Then we made lakhs of profit. We made lakhs of profit. Yeah, and we came out in profit. अच्छा, कल मेरा पेशेंस करेंसी में आएगा ही आएगा। तो वही बता रहा हूँ सर, जब हमेशा करेंसी में ऊपर चला गया अनफेयर में, सिंपली इतने सोच रहे हैं, चाचा पीछे खड़े हैं, आएंगे। कोई टेंशन नहीं है सर। I am more into options in currency. I love to play in options in currency, and I sometimes play the reverse models also. तो आप तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है हमारे ग्रुप के अंदर। आप भी थोड़ा पोस्ट कीजिए ना आपके ट्रेड वगैरह। ठीक है, ओके, करेंगे। हाँ, so at least we'll have a one more view. Umaji, see, you are saying that RBI will intervene at every stage or something like that. But will there be any instance where beyond RBI control things happen? That was when the Chidambaram was there, correct? Yeah, no. Actually, see, beyond RBI control, now the present dispensation is beautiful. It is working in tandem.
UPA government, in UPA, I don't want to name the name actually. In UPA government, there's usually the width between the year week, 52-week week high and low is around 18 to 22 rupees. I will tell you the year also. You take the data, back data of 2011, 12 and 12, 13. बहुत मुश्किल है, कई लोग मर गए. Dollar has been, I don't know, dollar has been highly active actually. It's highly volatile in those 2 years. And you see 2013, 2014 was the election. एक और चीज बता रहा हूँ, इलेक्शन के एकदम कुछ दिन पहले, जैसा अभी 19 में इलेक्शन चला गया, 24 में इलेक्शन आएगा, इलेक्शन का 24 है, 2013 में we have to be very careful because all dollar money will come into the election. तो उस टाइम इलेक्शन से पहले आप कोई भी डाटा, बैक डाटा लेके इलेक्शन से पहले जब पहला ईयर है, तो यू विल हैव द हाईएस्ट विथ. पैसा भी वहीं पर ही है बनना है. जैसा बोलते हैं ना सर, व्हेन द रोम इज बर्निंग, नीरो इज फिडलिंग. देयर इज अ प्रॉवर्बियल से, व्हेन द रोम इज बर्निंग, नीरो इज फिडलिंग. ठीक है सर, आप लोग सुने होंगे. सो वी ऑल हैव टू बी नीरो व्हेन वी प्लेइंग इन करेंसी. लेट द करेंसी बर्न, we will fiddle, that's all, simple. पैसा जितना ज्यादा वित्त है उतना ज्यादा पैसा. मैं तो अभी बहुत ही फील कर रहा हूँ, वित्त ही नहीं है करेंसी में. वो कोतारी साहब को 2-3 रुपए से ज्यादा डॉलर में वित्त नहीं है. यूरो में भी पहले 92 to 79 जाता था, उसमें भी वित्त नहीं है. दैट शोज द वेरी गुड गवर्नमेंट. आई फुली अप्रिशिएट, फैंटास्टिक गवर्नमेंट में अगर करेंसी ब्रॉडर रेंज में चले, मूव हो रहे, तो that is indirectly telling the stability of the economy. Right. Indirectly, it is authenticating the stability of the economy. पब्लिक को कहीं जाने की जरूरत नहीं है. कोई भी पब्लिक वोट करने से पहले अगर देखें करेंसी 4-5 साल में 4 रुपए से ज्यादा नहीं, स्टेबिलिटी है. आंख बंद करके कोई भी पार्टी है मारो. I am not for BJP, I am not for UPA, Congress, nothing. I belongs to the economy. That's all. 74 to 77. Yeah. अच्छा, अभी जब ये सब्जेक्ट आया है, ये आपका कवर्ड कॉल का, ये कॉल और पुट का, तो मेरा कल इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हुआ था पीताम्बरम जी से कि हमारे को जो इक्विटी में जो लॉस हो रहा है इन केस ऑफ सीएसपी एंड इन केस ऑफ कवर्ड कॉल क्यों हो रहा है. तो कंक्लूजन उनका ये था कि हमको सीएसपी तब करना चाहिए जब स्ट्रेंथ 0 आ जाए. बिल्कुल. हम क्या कर रहे हैं कि हम कभी भी लेके सीएसपी करते रहे, तो उसमें जब शेयर गिरता है ना, जबरदस्त लॉस हो जाता है. तो सीएसपी अपने को तब करना है जब मार्केट बहुत गिर गया है, तब अपना ये परसेंटेज स्ट्रेंथ 0 रहेगा. तो उस समय अगर आप सीएसपी करोगे, यू विल 99% यू विल मेक द मनी. उसमें मैं थोड़ा सा अमेंडमेंट इशू करूं. हाँ, ये मैंने 1 मिनट पहले पूरा बोल देता हूं मैं. सिमिलरली जब आपका स्ट्रेंथ 99% हो जा रहा है या 100% आ जा रहा है, उस समय अगर आप कवर कॉल करेंगे तो यू विल मेक मनी. बट प्रॉब्लम क्या है कि हमको खुजली इतना ज्यादा होता है ना कि अपन वो कभी भी लेके कवर्ड कॉल और कवर्ड पुट कर देते हैं कि इस लालच में कि हमको हर महीने हमको रेंटल इनकम चाहिए. तो वो थोड़ा कंट्रोल करके भी अगर हम वेट करें कि भाई हमारा स्ट्रेंथ 0 आ गया या 99 आ गया, तब हम अगर सीएसपी और सीसी करेंगे ना, तो जबरदस्त पैसा आएगा. पीताम्बरम जी, आपने ये बताया था ना. So अभी तो you did Infosys का PE you shorted recently. हाँ, तो PE का शॉर्ट क्या ना, वो नीचे था, तो उसमें वो पैसा वो दूसरे दिन दे दिया उसने 5,000. उसी में मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ. आई विल नाउ शो द चार्ट ऑन इक्विटी, जैसा सीएसपी का, सीसी का. ठीक है. सो कोई भी कंपनी बता दीजिए, मैं ओपन करके मैं दिखाता हूँ. मेरे पास चार्ट है. 1 मिनट पहले आपको होस्ट है ना आप भी. हाँ सर, एक्सिस बैंक. या आई विल ओपन एक्सिस बैंक. मैं एक बार म्यूट कर रहा हूँ सबको, क्योंकि काफी आवाज आ रहा है. एक बार सबको म्यूट कर रहा हूँ मैं. हाँ, अभी आप अनम्यूट करके बोलिए उमाशंकर जी. अनम्यूट कीजिए आपको, उमाशंकर जी अनम्यूट कीजिए. What about pair trading today? अरे वो तो फिर नहीं ले रहे हैं ना, आज इतना डिस्कशन हो गया, तो we will have on the next time. Yeah, let me just open the chart. Axis Bank.
तो ये अपने को ना कवर्ड कॉल और जो हम सीएसपी कर रहे हैं ना, वी हैव टू बी स्लाइटली केयरफुल। हमको कभी भी नहीं लेने लेना है कि इस लालच में कि यार मेरे को तो हर महीने रेंटल इनकम चाहिए ही चाहिए। उस रेंटल इनकम के चक्कर में हम कितनी बार फंस जाते हैं। ये जो आपने 0% और 100% बताया, हाँ, दिस इज ऑन वो जो हमने देखना है वो कितना डेली फ्रेम पे या वीकली पे या मंथली पे? पीताम्बरम जी आप हैं? पीताम्बरम जी 124 days सर। 124 days, ओके, थैंक यू सर। तो 124 डेज पे आप देखिए, जब भी वो 0 आ रहा है उस समय आप अगर आप सीएसपी करेंगे और जब वो 99 आ रहा है उसमें कवर्ड कॉल करेंगे, इनवेरिएबली यू विल मेक द मनी। बट उसी लिए पेशेंस चाहिए, जैसे उमाशंकर जी बोल रहे हैं ना, पेशेंस चाहिए अपने को। अपने को अगर पेशेंस नहीं है और लालच है कि मेरे को हर महीने मुझे करना ही करना है, देन यू विल गेट ट्रैप्ड। बिकॉज आज पूरी दुनिया को पता है कि लोग कवर्ड कॉल और सीएसपी कैसे कर रहे हैं, तो ऑपरेटर्स वो सारा डेटा रखते हैं, ठीक है ना, तो अपने को ऑपरेटर का फायदा लेना है। एक मिनट में शेयर कर रहा हूँ। But Kotarji, suppose you have share with you one lot and you want to earn rental, the same logic we will apply. नहीं, वो बात आपका सही है, तो रेंटल के इनकम के चक्कर में आपका डिलीवरी छूट जाएगा, फिर आपका डिलीवरी छूट जाएगा, वो प्रॉब्लम है उसमें। एक्सिस बैंक में वो चार्ट नहीं बना, फिर भी मैं बता रहा हूँ इसमें प्रेज्यूमिंग, ठीक है। जो पीताम्बरम जी ने बोला 100% परफेक्ट एक्चुअली। सी सपोज व्हाट इज टेलिंग, सपोज यहाँ पर है 99% आ गया, नहीं वो नीचे का दिखाना है ना सर। एक मिनट खरीदने की, एक मिनट। सीएसपी फर्स्ट लेट मी शो द सीएसपी। तो चार्ट में 99% क्या दिखता है? 99% नहीं दिखता सर, मैं चार्ट का कंपैरिजन करता हूँ थोड़ा सा, समझ, दैट्स व्हाट आई एम समझ लीजिए। जो एज पर हिम एक्चुअली 99% 0% इधर आ गया, सीएसपी आई एम टॉकिंग, ओके। यहाँ पर 0% आ गया, फैंटास्टिक। यहाँ पर हम सीएसपी का 10% ओटीएम सीएसपी बेच सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी इधर नीचे आ सकता है। व्हाट आई सिंपल थोड़ा सा एडिशनल, थोड़ा सा जो मेंबर्स को केयर करने के लिए समझ लीजिए। अगर ये बीबी बोलिंगर बैंड बिड मैंने ले लिया 20 डेज का, EMA 9 and LRC 9, ठीक है सर, EMA 9 and LRC 9. I only request the members to see if it is 0% before shorting the CSP, whether you see this, एक मिनट, yeah, the MA and LRC, how far away from the BB mid? अगर ये BB mid से away है, still this I call it as a gliding snake under the ladder. मेरा अभी वर्षन दे रहा, मेरा नाम थोड़ा याद रखने के लिए, इट इज अ ग्लाइडिंग स्टेक अंडर द लैडर। तो ये स्नेक कहां तक जा रहा है? टिल सच टाइम छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक क्रॉस ओवर हो रहा है, दोनों क्रॉस ओवर हुआ। एक्चुअली MAC LRC आर ब्रदर्स, यू हैव टू सी टू थिंग्स, वन इज ग्लाइडिंग स्टेक अंडर द लैडर, हाउ फार इट इज गोइंग। ये दोनों ब्रदर्स क्रॉस ओवर सड़क पार किया कि नहीं, सिंपल समझ लीजिए, सिंपल लेमन लैंग्वेज। ये दोनों नीचे जा रहा मतलब 99% स्टिल कंटिन्यू, बेटर नॉट डू। यहाँ पर आकर टच हुआ, यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्रॉस नहीं हुआ, ठीक है सर। अब यहाँ छोड़ दीजिए, और नीचे जा रहा है, छोड़ दीजिए। जब यहाँ पर क्रॉस हो रहा है ना सर, कंफर्मेशन and LRC and LAE, MA, LRC both have intersected also, okay, when it has crossed। हमें और 10% नीचे OTM का CSP बेचने का, ताकि हमें फिर भी अगर वो हिट भी हो गया ना, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रुपीज, नॉट ओनली 10%। यू सी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 99% फॉर एग्जांपल इफ यू से 750 रुपीज, वेयरएस यहाँ पर 650 रुपीज को हम CSP बेच रहे हैं, मतलब और 10% 550 सर, कम से कम 30% के नीचे आपका स्टॉक मिलेगा। प्ले लॉन्ग टर्म ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम? CSP में फंसेंगे नहीं, एक्सेप्ट ब्लैक स्वान इवेंट, उसमें किसी का हाथ में नहीं। तो आप बोल रहे कि LRC और EMA जहां दोनों क्रॉसओवर हो रहे हैं, जाना क्रॉसओवर, यू फर्स्ट असर्टेन वेदर इट इज जीरो, ये चार्ट लेके बैठ जाइए। कुछ नहीं करना, जैसा ना वी हैव टू फिश इट, वी हैव टू फिश कैच करता है क्रेन है ना, एक टांग में खड़ा रहता है पांड में, वो चारों फिश घूमता रहता है, वेट करता है, जब अच्छा मोटा सा फिश आता है तो टक से पकड़ के ले जाता है। दैट्स ऑल, सिंपल सर, वेट करें,
कोई दिक्कत नहीं, जितना मुझे जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं, इवन 1 पैसा इज बेनिफिशियल फॉर अस। अगर यहाँ पर 90 रुपया मिलता है, 2 रुपया नीचे 88 में मिलता है, 90 में क्यों खरीदें? 2 रुपया मारवाड़ी बनने का इस चीज में, तो नीचे मैं छोड़ देता हूँ, मैं करता हूँ, नीचे छोड़ गया, यहाँ कर लेता हूँ मैं, क्रॉस ओवर में कर लेता हूँ। दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम रामकृष्ण जोशी। उन्होंने पासिंग कमेंट्स, मैंने बोला ना, उन्होंने दिया सर। यहाँ इस वेबिनार में हर एक पासिंग कमेंट्स का इट इज एक्चुअली इट्स सिंपली कमेंट नहीं है, इट इज लैक्स ऑफ नॉलेज। अगर कोई यहाँ का जो मेंबर्स है, व्हेन दे वॉच द वेबिनार्स ना, आई एम नॉट जोकिंगली टेलिंग, आई एम वेरी सीरियसली टेलिंग, दे हैव टू बी बहुत केयरफुली, दे हैव टू रीड बिटवीन द वर्ड्स। रामकृष्ण जोशी जी ने बोला, इज माय मानसिक गुरु है, बोला एक बार, बोला उनसे पूछे, अरे इतना ही काफी है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं, सिंपली बोल के चला गया सर, पासिंग कमेंट्स दे दिया उन्होंने। Actually, बाकी कुछ जरूरत ही नहीं है, बोल दिया, यहाँ तक Umashankar ji, if I remember correctly, Mr. Joshi's webinar, he mentioned 5 days EMA. Am I right? Yeah, maybe. But actually, see, he was talking about 20 days EMA. 5 and 20. 5 and 20. 5 में क्या है ना सर, वो एकदम, वो जो ग्लाइडिंग स्नेक है ना, वो एकदम अटैच करके जाता है हमें, वी कैन नॉट एबल टू मेक इट आउट, क्या क्रॉस ओवर है, टेंशन में थोड़ा सा 9 कर दिया, थोड़ा बहुत ही, वो मिडवे के से ना, सड़क पार से ज्यादा हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं। तो LRC 9 days और आपका EMA 9 days। आई एम यूजिंग 9 और BB 22 और BB 22 BB 20 मंथली BB। तो क्या है, अब 0 आ गया, लाइक दैट 99 आ गया। कोई फ्यूचर बेचना चाहे या कोई OTM कॉल बेचना चाहे, छोड़ दीजिए, MA LRC जा रहा है, दोनों स्नेक ब्रदर्स जा रहा है, जाने दीजिए, BB मिट गए एकदम जाके। उस टाइम क्या करना है, आई विल टेल यू जस्ट वन मोर थिंग, इसको 1 hour में ले रहे हैं, लेट मी चेंज इट एक्चुअली, जस्ट अ मिनट। अब डॉलर का कॉन्सेप्ट भी तो यही है ना, कर सकते हैं सर, इसमें डॉलर का कॉन्सेप्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। जस्ट अ मिनट, आई विल कम बैक। सर हमारे चार्ट में तो LRC नहीं दिखा रहा है, किसी और नाम से भी है क्या LRC? लीनियर रिग्रेशन करके सर्च करें सर। एक देखिए, आई एम जस्ट, अच्छा हैकेनेशी में किया आपने, हैकेनेशी में, एंड इट विल बी मच मोर क्लियर। समझ लीजिए, यू वांट टू सेल CC, यहाँ पर 99% आ गया, छोड़ दीजिए, कोई सब इसका ऑल नॉइज हैज बीन टेकन आउट। एक्चुअली देखिए ना, फैंटास्टिक जाएगा, जब जा रहे हैं इंटरसेक्शन से पहले या कहीं भी आप शॉर्ट कर लीजिए, CC शॉर्ट कर लीजिए, आपके पास डिलीवरी देने के लिए तैयार है, दैट्स ऑल। ओह अच्छा। अभी क्या है, since the market is at the very highest level, it will be beneficial if we go for CC with the delivery. तो इसको 1 hour के चार्ट पे देख रहे हैं आप? 1 hour का चार्ट भी देख रहा हूँ मैं, उसका मैं डेली चार्ट भी डाल देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले कुछ किया होगा। 1 hour डेली चार्ट सर, ये वी आर टॉकिंग अबाउट, वो है ना सर, एक्चुअली वी शुड सी ओनली डेली चार्ट। And suppose यहाँ पर 0% आ गया, because 0% is nothing but a weighted average of 67 days, ठीक है, और 124, 256, whichever you follow, ठीक है। उसके बाद आप ये दोनों इतना दूर है, छोड़ दीजिए ना, जा रहा है, जाने दीजिए, यहाँ पर कर लीजिए, CSP इधर कर लीजिए, that's all। एक्चुअली यही प्राइस CSP के लिए अच्छा है, यही प्राइस फ्यूचर बाय के लिए भी अच्छा है, करेक्ट? बिल्कुल, फ्यूचर बाय भी कर सकते हैं ना यहाँ पे। फ्यूचर सर, फ्यूचर एक्चुअली क्या CSP है, इट इज, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग इज फॉर द लॉन्ग टर्म प्ले। अगर CSP में करें, हमारा माइंड में वी ऑलरेडी हैव एन इंटेंट ऑफ टेकिंग डिलीवरी। जैसा आपका जो फर्स्ट वेबिनार में ना, CSP में जो है, यू शुड बी रेडी फॉर द डिलीवरी, ऊपर चला गया रेंटल, दैट्स ऑल। वो यूज कर सकते हैं। जो विद्यारंजन जी का जो स्टैंडर्ड डिविएशन परसेंटेज वगैरह है ना, थोड़ा सा मैं ट्यून करके मैं अपना कन्वीनियंट के लिए, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। आई एम टेलिंग 100 नहीं 200%। सीतामढ़ी जी कह रहे हैं 200% परफेक्ट। Umashankar ji, future buy we are not clear. Can you explain it again? Future buy.
सर अगर फ्यूचर भाई यहाँ अगर आप लेंगे एटीएम अद्दमनी कॉल, ठीक है, ये एटीएम लेवल में लेंगे जो अरे म्यूट कीजिए यार, जिसकी आवाज आ रहा है प्राइस लोगों का लेंगे, बैकग्राउंड में, प्लीज अगर म्यूट। फ्यूचर प्राइस लेंगे उसके बाद एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट द ऑप्शंस कॉल, इसका एडजस्टमेंट एंट्री वगैरह सब मैं आई एम लेमैन, ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ पर लेंगे तो ऊपर नीचे चला गया, तब भी अगर आप फ्यूचर का लास्ट बुक करके ले लो तो आपको जो जहां पर आपने फ्यूचर बेचा वहां पर वो एज इट इज 15-25% या 30% में तो आप नीचे ले रहे ना, बाय इट एंड गो फॉर सीएनसी एंड प्ले फॉर लॉन्ग टर्म, दैट्स ऑल. बट यू हैव टू डू, आई एम प्लेइंग इन एमआरएफ, एशियन पेंट्स, अच्छा शेयर्स में, अबाउट इंडिया बढ़िया शेयर्स में कर रहा हूँ मैं, आई नेवर गो फॉर फालतू शेयर्स, वेरी स्ट्रांग शेयर्स, सब में पैसा बना. पीताम्बरम जी, you want to say something? पीताम्बरम जी, हाँ बोलिए. या सर, इसमें बेसिकली सर हमें ये देखना है कि हमें करना क्या है, फ्यूचर का प्रॉफिट लेना है या ऑप्शन का बाइंग करना है. अगर आप प्रॉफिट फ्यूचर का लेना चाह रहे हो तो आपको उसके सामने ऑप्शन से हेज करना है इन द मनी, ताकि आपका रिस्क कम रहे, रिवार्ड अच्छा रहे. फिर से बोलिए, पहले फ्यूचर खरीदना है और आईटीएम पुट इन द मनी को हेज करना है, जहां पे आपका डेल्टा 75 या 80 आता है. कौन सा वाले से करना है, कॉल से या पुट से? आप अगर फ्यूचर बाय कर रहे हो तो आप पुट बाय करोगे इन द मनी. अच्छा. मोर प्रीमियम, मोर सेल कर रहे हो तो इन द मनी कॉल बाय करोगे, जिसका डेल्टा 0.7 to 0.8 के बीच में है. तो आपका रिस्क 7 to 8,000 आता है, प्रॉफिट आप पूरा रन कर सकते हो. अभी जैसे इन्होंने यही कहा था, अगर ये लोएस्ट बैंड के जो रेड में आप अगर बाई करते हो फ्यूचर, ऊपर जाके नीचे भी आया, फिर लास्ट में ऊपर ही गया हुआ है, तो अगर आपका यहां से यहां लेके मतलब दिसंबर से लेके फरवरी में तक आपको अच्छा रिटर्न दे चुका है वो, 660 से 798 सॉलिड मिलेगा सर. एमए एलआरसी है ना, एमए एलआरसी ब्रदर्स हाथ जा रहे हैं ना सर, लेके सड़क पर ही जा रहे हैं सर, नीचे नहीं आ रहे हैं. आप जो बता रहे थे ना सीएसपी और सीसी का कॉन्सेप्ट, पीताम्बरम जी. हाँ सर, वही मैं बोल रहा हूँ ना, जब अगर आपको सीसी करना है, सीएसपी करना है, एकदम नीचे आया मार्केट, वहां पे आपको प्रीमियम बहुत अच्छा मिलेगा, वहां पे आप सीएसपी कर लो, क्योंकि नीचे जाएगा तो भी आप उसको लेने को तैयार ही है ना. आप 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपये में सीएसपी मत करो, जब वो प्रीमियम 80 रुपया 90 रुपया जा रहा है तब आप करो. इसमें सर प्योर ट्रेडिंग करना है, वी हैव टू फॉलो डीबीएस आल्सो. उनका जो ट्रेनिंग है वो चार्ट वगैरह बताते हैं, लाइन वगैरह खींच के. आई एम आल्सो प्रैक्टिसिंग नाउ वेरी सीरियसली. तो क्या वेयर द नेक्स्ट लेवल विल गो एंड हिट, that also ascertain the facts actually before I enter into the trade. तो उनका भी सर वो मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं लेट मी बी वेरी फ्रैंक एक्चुअली ब्लंटन से एक्चुअली दिस पीताम्बरम, डीबीएस, these people are jambawans. सॉलिड है सर, सॉलिड, बहुत सीखने को मिलता है. वो रामकृष्ण जोशी, देयर आर जाम्बावांस तो मालूम होगा सबको, जाम्बावांस, विजर्ड्स. And one more wizard has gone out. I will try to pull him back. मोहित कक्कर. आप जब आप नोट करते हैं तो परफेक्ट पिकअप करते हैं सर. अब आप बोल रहे हैं ना कि वो फैमिली का हेड है, तो मुझे तो ख्याल रखना पड़ता है ना. Kondar ji, I have got 3 questions in this line in the present mode, maybe a little away from the current discussion. 3 questions to you. Okay. We thought of forming a company. Whether we are going in that direction, anything has been done. One. Nothing. अच्छा, but still the idea is there, or we are going to, how is it? नहीं, उसमें बहुत सारे complications हैं actually. There are too many legal and corporate issues are there. Lot of, अरे यार अपन वो 250 रुपए का मैं ये पेड वेबिनार करता हूँ तो उसमें लोगों को इतने कमेंट्स आ गए मेरे को. तो उसमें वो ट्रस्ट और वो बहुत इश्यूज है उसके अंदर, वो नहीं हो पाएगा. आई हैव अ डाउट कि एनीथिंग विल हैपन. आज हम पीआर सुंदर का वेबिनार के लिए 50,000 देने को तैयार है, 60,000 देने को तैयार है, और 250 का यहाँ इनको दिया तो उसमें लोगों ने क्वेश्चन उठाना चालू कर दिया.
So मतलब लोग कुछ भी कमेंट कर देते हैं यार, मतलब you really feel hurt sometime, and I was really hurt. मेरे को एक ने बोला कि आप तो कमर्शियलाइज कर रहे हो अपना चैनल को। अरे मैंने क्या कमर्शियलाइज कर दिया यार, मैंने जरा बताओ तो सही। आपको अटेंड करना है तो अटेंड करो, नहीं करना है तो मत करो। ये जो कॉन्सेप्ट पीताम्बरम जी ने बताया है या जो उमाशंकर जी बता रहे हैं, यू विल नॉट गेट एनीवेयर इन द गूगल और एनीवेयर इन द इंटरनेट। और उसमें लोग बोलते हैं आप कमर्शियलाइज कर रहे हैं, तो वो नहीं होगा अपने आप। आई हैव अ डाउट। और दूसरा बोलिए सर। हाँ बोलिए कोतारी जी, मैं भी अपना मांगूंगा कुछ तो इसको, मुझे भी कमर्शियल पॉइंट में मांगूंगा। जिस दिन हम सब लोग पिकनिक में जाएंगे गेट टुगेदर में, एक कप चाय पीऊंगा जरूर। अरे आप लोगों चाय के क्या साथ। मतलब वी कैन हैव अ डिनर आल्सो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप भी अगर ये बोले कि साहब ये तो इसलिए कर रहे हैं कि इनको डिनर लेना है या इनको 300 रुपीज लेना है, तो इट्स रियल सो चाइल्डिश। मतलब फिर भी लोग कमेंट करते हैं, कमेंट करते हैं, और वही लोग 50,000 रुपए वो पिया सुंदर को दे देंगे। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जितनी नॉलेज हमें इस मिल रही है, वो अगर हमें कहीं और जाते हैं तो वेरी कॉस्टली सर। आई मीन इक्विटी मास्टर ये वो पता नहीं क्या क्या बेचते हैं सर, और उनको कुछ हमको समझ में नहीं आता। दे आर आस्किंग 90,000 20,000 पता नहीं क्या क्या मांगते हैं सर। आई मीन एब्सोल्युटली यू आर करेक्ट कि ये बेसिक नॉलेज भी है चाहे, और हमें बिल्कुल एज ए लेमैन हमको समझ में आ रहा है। वो इतना टेक्निकल बताते हैं और वो बेकार है सर उनका इतना खर्चा करना। इवन आप, मैं कह रहा हूँ चार्जेस लेते हैं ना, इट इज वेरी नॉमिनल, यू मस्ट टेक, क्योंकि फिर उसमें इंपॉर्टेंस खत्म हो रही है सर। आई मीन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इतनी नॉलेज के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है सर। राइट। बिल्कुल सर, ये तो गुरु दक्षिणा है, ये थोड़ा बहुत तो जरूर होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंस खत्म होती है सर। लॉस से भी तो बच रहे सर। हाँ, और दूसरा चीज मैं बता रहा हूँ, फ्यूचर में प्ले करके 250-300 रुपए क्या मैटर करते हैं। अरे दूसरा बता रहा हूँ, अपने ग्रुप का जो कंबाइंड एक्सपीरियंस है, जो सारे लोगों का जो, अब जैसे मतलब आपके जैसे भी ये सुनील कुमार अग्रवाल जी ने बोला, उमाशंकर जी हैं, इन लोगों का जो कंबाइंड जो एक्सपीरियंस है ना, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक इंडिया का कोई ग्रुप नहीं है जहां के आपको इतने सारे लोग इतना एक्सपीरियंस वाले मिल जाएंगे। जैसे मैंने बोला था, वी हैव अ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन आवर ग्रुप, वी हैव सो मेनी चेयरमैन इन आवर ग्रुप। एक चेयरमैन नहीं है, कम से कम 8 चेयरमैन अपने ग्रुप में जो साइलेंट ऑब्जर्वर्स हैं, बट उनका एक्सपीरियंस है। सो मेनी ईडीज, डायरेक्टर्स, दे आर इन आवर ग्रुप। तो वी आर सो फॉर्चुनेट दैट वी हैव दिस ग्रुप। और फिर उसमें ग्रुप के लोग ना उल्टा सीधा कमेंट करेंगे तो आपको खराब लगता है। दैट इज व्हाट आई वाज फीलिंग। हाँ शेखर, आगे बढ़िए। सर इन लोगों से अपॉइंटमेंट लेना होता था तो 5 मिनट की अपॉइंटमेंट के लिए महीनों वेट करना पड़ता था। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, इफ यू वांट टू मीट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यू विल नॉट गेट द अपॉइंटमेंट। यस, एंड यू नो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन होता है? इट इज जस्ट लाइक जो आपका ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर जो पूरा बजट बना रहा है ना, वो बनाता है उसका सेक्रेटरी। वो उसको पावर है, वो अपने ग्रुप के मेंबर हैं। कैन यू बिलीव इट? दे आर द मेंबर ऑफ आवर ग्रुप एंड दे आर एक्टिव आल्सो इन आवर ग्रुप। और कोई अगर उल्टा सीधा रिमार्क बोलेगा, कोई चाइल्डिश टाइप रिमार्क डालेगा, तो डू यू थिंक दैट अच्छा लगेगा किसी को? दैट इज व्हाट। चलिए, हाँ Kothari ji, second point is, now we were avoiding crypto, saying that it is not legal saying. Now government in the budget, they are going to tax 30% and regulation also probably will come soon. Now can you plan any webinar on that? अरे बाबा, वो क्रिप्टो अभी भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। अभी भी मतलब ऑन द कंट्री अभी ज्यादा आपका मतलब रिटर्न नहीं है। मतलब 40% तो गवर्नमेंट ले जाएगी आपसे, 30% तो टैक्स लगेगा, आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, प्लस टीडीएस देना पड़ेगा। तो 40% तो ऑलमोस्ट आपका एक्सपेंस होने वाला है। तो क्या बचा है उसके अंदर? अच्छा, मेरे हिसाब से क्रिप्टो में कुछ नहीं बचा है, तभी तो आपका बिटकॉइन आधा हो गया। जस्ट इमेजिन करो कि अगर 60,000 पे अगर आपने बिटकॉइन ले लिया होता और आज 30,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है, आपका क्या हाल होता उसमें? मैं तो आई एम नॉट इन फैक्ट। हां, no, it is very highly fluctuating actually. It is very risky. People should take it with pinch of salt. मैंने इसमें फाइनेंस मिनिस्टर का एक इंटरव्यू सुना था, एंड वेयर शी सेड कि ये लीगलाइज नहीं कर रहे हैं, it is just that people are earning money from that, so we are just taking the TDS from that. They are not legalizing it, so it was clearly said by her. Actually TDS is nothing but tracking those guys, nothing more than that. TDS इसलिए इंट्रोड्यूस होता है, एक बार TDS आ गया कहीं भी, तो that fellow cannot escape from the clutches of the government. He cannot evade tax. TDS is the instrument, very powerful instrument. Correct.
मैं तो नहीं करूंगा। आई विल नेवर इंडल्ज इन क्रिप्टो। जैसा सुनील अग्रवाल जी ने बोला, एक मिनट, अपन इक्विटी से करेंसी में आने का क्यों कोशिश कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द लेस वोलेटिलिटी, कि जितना कम वोलेटिलिटी होगा उतना पैसा ज्यादा कमा सकते हो। अभी आप इससे अगर क्रिप्टो में चले जाओगे, वो तो मतलब 50% ऊपर नीचे हो जाता है यार। नहीं, Kotarji, why I asked that is, Chauji was saying, like we are allocating say 20% of our capital into gold, right? So we can allocate some 5% of the capital into the crypto. That is what he was suggesting. सर एक्चुअली सर राजन शेखर जी, एक्चुअली क्या है, everybody is not the DBS. DBS is an high experience and is a master in charting and ठीक है, and moreover if you allocate 5 years, allocate करने से पहले सोच लीजिए आपका 30 years of service है, ठीक है सर, और समझ लीजिए 5 साल सर्विस खत्म, 5 years will go into dust. वो पहले माइंड फ्रेम बनाना पड़ेगा। क्रिप्टो इज वेरी डेंजरस, जैसा सुनील अग्रवाल जी ने बोला, वी हैव टू टेक द क्रिप्टो विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। आई विल जस्ट ऐड ऑन टू दैट, वी शुड नॉट टेक द क्रिप्टो विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, rather we should take it with the bag of salt. Okay, right. Now that the mood is not there for crypto, let's forget it. My third question is, Kotarji, what I heard was this lot of black money is there still in real estate, right? Now that is why the government is bringing the digital currency. So once the digital currency comes, probably the black market will be wiped out. Maybe a few years it will take, but at that same time, the real estate market will come down drastically. What is your view on that? नहीं, ऑलरेडी अगर जैसे आप मेट्रोज में इफ यू आर डूइंग एनी ट्रांजैक्शन रियल एस्टेट नाउ, इट इज 100% स्क्रूटनी. मुंबई में यू बाय एनी प्रॉपर्टी अबव 50 लाख रुपीज, इट गोज फॉर 100% स्क्रूटनी. ओके, and now the guidance rate and the guidance rate is nothing but your registration rate, and the open market rate is almost very very near. Like in Mumbai, if you say ki what is my guidance rate and what is my actual rate, the difference may be 10 to 15%. So here in Mumbai now all the transactions are through check only. Then nobody is transacting through any cash or something like that. So I will say that government has already, you can say that black market system in Mumbai has gone. Maybe in Chennai, I don't know. But it is almost not. Now every transaction government is tracking. The form AS form what they've introduced, you will see every transactions of your has been reported in that one. Whether mutual fund or whether anything, it is reported there. So these transactions will also come there. So but NCR may be SIA. But in NCR also it is the same. NCR sir, कई जगह पर तो रेट कम है, मार्केट आई मीन सर्कल रेट से भी कम है मार्केट रेट कई जगह पर. हाँ, तो फिर तो वहां तो ब्लैक मनी बल्कि वो ब्लैक का वाइट का वो मतलब रादर रजिस्ट्री तो बल्कि ज्यादा पे करानी पड़ रही है सर, क्योंकि वो मार्केट रेट इतना नीचे आ गया बिकॉज ऑफ द कोरोना. लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज आर सरप्लस इन सम प्लेसेस. अच्छा. हाँ, तो अभी वो ब्लैक वाला इंडिया में सिस्टम खत्म होता जा रहा है. So, but the question is that whether the real estate value will come down. देखो शेखर, मेरा इसमें व्यू वेरी क्लियर है कि वो जो हमारा एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ होता था रियल एस्टेट में, वो दोस डेज हैव गॉन. ओके, अगर आपको अपना पर्सनल यूज करना है, इफ यू वांट टू एंजॉय दैट प्रॉपर्टी, यू मस्ट हैव अ वेरी गुड हाउस, यू मस्ट हैव अ वेरी गुड फ्लैट, गुड इंटीरियर, दैट्स ऑल. बट इफ यू थिंक कि मुझे वहां से रेंटल इनकम कमाना है या मेरे को वो करना है, तो दैट्स अ वेस्ट. You will not make money there. You will not make money there. That means if you have got few properties, better to dispose them. Sir, let me come. I just जो राजन शेखर का है, कोतारी जी ने सही कहा, जो रहना है तो एक मकान खरीद लीजिए. अब मैं उससे थोड़ा सा आगे चला गया, because nowadays youngsters they don't want to buy any flat at all because it's a dead in instruments actually. I think it may be for another at least 15 years it will be dead instrument. That's sort of what I did. अभी मेरे पास 2 ओन फ्लैट था इसी जहां पर मैं रह रहा हूँ, तो 2 बेडरूम मैंने बेच दिया ताकि आई हैव इन्वेंटेड न्यू मॉडल्स. एक्चुअली वहां पर क्या मेरा जो है, अभी मैं 20,000 का रेंट दे रहा हूँ. एक्चुअली आई एम स्टेइंग इन माय कलीग्स हाउस ओनली. प्रवीण अग्रवाल, सुनील अग्रवाल मस्ट बी नोइंग हिम. प्रवीण अग्रवाल इज अ GM. ठीक है, उनके घर में 2000 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया, आई एम गिविंग 21,000 रेंटल. फैंटास्टिक चल रहा है. वो मैंने 48 बेच दिया. 48 लाख बेच के इसमें अगर मैं लगा दिया करेंसी में,
सर अगर मुझे अगर 3-4 लाख 5 लाख भी मंथली मिले, 60 लाख वहां कहाँ से मिलेगा अप्रिशिएशन? आई एम गोइंग इन दैट वे। और दूसरा 50,000 में रेंटल दे दूं, पोस्ट लोकेलिटी में रह सकता हूँ, कोई टेंशन ही नहीं है मुझे। 6 लाख ज्यादा से ज्यादा ईयरली चलेगा। आई एम गेटिंग अराउंड एटलीस्ट इवन इफ आई गेट 20 lakhs फ्रॉम हियर 4 times, इसी से मैं देता रहूंगा। मेरा जो मकान का मालिक कोई पूछेगा नहीं, मैं भैया लोड कितना चाहिए ले रेंटल, खत्म। आई एम गोइंग इन दैट डायरेक्शन एक्चुअली। आई एम फॉलोइंग द यंगस्टर्स। ओला उबेर मॉडल। Actually, Kotarji, what Umaji is saying is truth. A lot of maintenance issue comes. Other legal issues also, maintenance issue, legal issue, and then somebody forcefully taking over your property. That issue. If you are not in that city, then your house is gone almost. Yeah. Like I'm giving an example. I'm in Mumbai. I have a flat in Noida, the Greater Noida. But it is almost like it's a waste. अच्छा. So मतलब टोटल वेस्ट है। मेरा 3 बेडरूम का ग्रेटर नोएडा में फ्लैट है, मतलब इट इज जस्ट अ वेस्ट नाउ। कुछ नहीं है। No, what is that you are planning then? कुछ नहीं, क्या कर पा रहा हूँ? ना बेच पा रहे हैं, ना खरीद पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। तो 10-11 हजार का रेंटल आ रहा है। 3 bedroom हाउस इन ग्रेटर नोएडा, आई एम गेटिंग अ रेंटल ऑफ 11,000 रुपीज। अब बोलिए बात। सर मैं 2000 कारपेट एरिया में मैं रह रहा हूँ सर, 21,000 दे रहा रेंटल। 21,000 रुपए। हाँ बोलिए। अब मैं बाद में पूछा, मैंने गलती से ज्यादा दे रहा हूँ मेरा अपना दोस्त को। यहाँ तो 14,000-15,000 में भी मिल रहा है। हाँ तो रेंटल सर सो लो, अभी क्या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करोगे आप? हाँ अगर आपको खुद को रहना है, then you must have a very good flat. There is very good flat. Kotarji, your Noida flat, you must be getting whatever you have invested, na? So you can sell it off, no? अरे यार वही पैसे को अगर मैं और जगह लगाता तो वो मेरा पैसा 2 करोड़ का हो गया होता ना। वो फ्लैट 40 लाख में भी नहीं बिक रहा है। ये देखिए ना, ग्रेटर नोएडा में उसी पैसे को मैं अगर बॉम्बे में लगा दिया होता तो एप्रिशिएशन होता था, बट अभी नहीं होगा। अभी नहीं होगा। अभी नहीं होगा, वही बोल रहा हूँ। यू कैन डिस्पोज दैट नोएडा फ्लैट। आई एम आस्किंग। अरे यार वो लेने वाला होना चाहिए ना, देन यू हैव टू बी देयर टू डील आल्सो डील। आई एम सर वो शेखर राजन जी को दे दीजिए ना, वो खरीद लें। खरीद लो। Now I am in a mood of selling my property. सर आजकल यंगर जनरेशन है, न्यू जेन, उनका कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। हाँ तो इसीलिए उनको घर नहीं चाहिए, इसलिए प्रॉपर्टी कोई खरीद ही नहीं रहे। Right. And we are living in the past and we are living in the future. Nowadays, younger generation, they are very practical. They live in the present. Right. That's why they keep enjoying it. They keep enjoying. आप जितना मर्जी बोलो यार सिक्योरिटी के लिए, वो सुनेंगे नहीं। रिटायरमेंट घर तो होना चाहिए उमाशंकर जी, एक घर और एक कार एक जरूर होना चाहिए अपना खुद का। उसका जो सेटिस्फेक्शन है उसका कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है ना। एक होना चाहिए, बट वो सेकंड हाउस में इन्वेस्टमेंट करना, थर्ड हाउस में इन्वेस्टमेंट करना, दैट इज अ फुलिशनेस। दैट इज व्हाट आई सर मेरे पास होंडा सिटी आईवी टेक था, मैंने बेच दिया। 3-4 साल 5 साल चलाया, बेच दिया। अब मैं मोबाइल में क्लिक करूं, आई एम कॉलिंग बेस्ट एसयूवी, तो चुटकी में आ जाता था घर के सामने। कोई चलाता है, मैं दे देता हूँ। बिकॉज़ एक्चुअली इफ आई गो फॉर अ कार आई हैव टू स्पेंड अराउंड 20-25 lakhs। No maintenance, nothing. So you keep enjoying different variety of that. नहीं, नॉट ओनली दैट, योर ड्राइवर कॉस्ट इज सो हाई। अदरवाइज 20,000 ड्राइवर का दो, पेट्रोल का दो, कार इंश्योरेंस का दो, उससे तो ये ज्यादा अच्छा मॉडल है ना। और पार्किंग का प्रॉब्लम है बॉम्बे में पार्किंग इज सच ए बिग इशू है। करेक्ट। तो वो उसमें कोई पार्किंग का लफड़ा नहीं, कुछ नहीं, कहीं भी चले जाओ तो है। चलो ठीक है, अपना अपना है, बट एक कार होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई ऑलवेज, एक कार फॉर इमरजेंसी यूसेज, फॉर इमरजेंसी देयर इज एनी सडन इमरजेंसी, अपना कार होता तो फायदा होता है। या वो होना चाहिए। वो आजकल वो भी है सर। मेरा जो बहू का डिलीवरी था, मैं व्हेन आई वाज स्टेइंग इन मुंबई एक्चुअली, एस्ट्रा हिरानंदन एस्टेट, 2 मिनट भी नहीं लगा सर। हम लिफ्ट से नीचे ना भी उतरे तब तक आ गया गाड़ी। इतना बॉम्बे में बहुत अच्छा है। बॉम्बे में ओला उबेर इज वेरी गुड, बट नॉट इन एवरी सिटी। नॉट इन एवरी सिटी। अभी यहाँ पर भी ठीक है, इंप्रूव हो रहा है। बॉम्बे डिसिप्लिन मींस आई हैव टू से ओनली मुंबई। तभी तो वी आर मिसिंग यू। We are missing you in Bombay, na? I will come back, sir. Let me come back. Let me make some very good amount. क्योंकि आप लोग है ना सर, बाथरूम के लिए भी जो 5 फ्लोर मांगते हैं सर, दिक्कत नहीं है सर। बहुत महंगा है सर। मुंबई is very costly. Very expensive. Very expensive. Very costly. We'll end now. It is 1:30 already. उमाशंकर जी, मेरा एक डाउट है। जी सर। एक्चुअली इक्विटी के लिए हम इंडिया विक्स देख के वॉलेटिलिटी करते हैं, करेंसी के लिए कौन सी देखना है?
एक वो करेंसी के लिए सर मैं एक्चुअली आज तक तो मैंने कोई विक्स मैंने देखा नहीं ना। नहीं, डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स को देखिए। सो DXY देखते हैं, DXY देख सकते हैं। DXY इज अ वेरी फैंटास्टिक। DXY, व्हाट इज DXY? DXY डॉलर इज इंडेक्स, बास्केट ऑफ करेंसीज। हाँ वही डॉलर, हाँ वही डॉलर रुपी इंडेक्स जो है ना, डॉलर क्या है, DXY। हाँ जी वो देख लिया। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन है, ये LRC है ना, जीरोधा में मुझे नहीं आ रही है, कौन सी सेलेक्ट की आप एक बार दिखा देंगे? लीनियर रिग्रेशन। एक्चुअली उसमें 4 आ रही है। सर दिखाता हूँ। उसमें लीनियर रिग्रेशन 4 आ रही है जीरोधा में। हाँ सर मैं अभी दिखाता हूँ। ये इंडिकेटर्स में है ना सर, देखिए ये तो बोलिंगर बैंड, ये लीनियर रिग्रेशन कर, एक ही है इसमें तो। ओके समझ गया। उसमें एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ओके सर, थैंक यू। and I put the volume also चाहिए। बाकी VWMA, VWF वगैरह जो बाकी जो जितना, this is a simple masala sir, this is something like a pizza and add on you can make it actually as well. और जब भी क्रॉस ओवर हुए आपको जो है बेचना है खरीदना है। क्रॉस ओवर हो गया 99% आ गया ऊपर की तरफ, अभी वेट करने का, लेट द ब्रदर्स गोज ऑन एक्चुअली, दोनों हैंड इन हैंड जाए। वो बीबी मिड से बहुत ही अवे है, लेट देम गो, नो प्रॉब्लम। जो हाइकेनेसी में फर्स्ट रेड कैंडल एक्चुअली वी हैव प्रीवियसली वी हैव डिसाइडेड टू सेल CC कवर्ड कॉल at 99% ना, we have already mentally decided, why not wait for some more time, let it go further actually। जो हाइकेनेसी में कन्वर्ट कर लीजिए 99% में आने के बाद, और कितना ग्रीन कैंडल जा रहा था जाने दीजिए ना, उसके बाद रेड कैंडल आ गया तो बेच दो, क्या आपने पहले ही बेचना था, अब बेचो। वही है उसको 10% वोटिंग में बेचो। स्टॉक होना चाहिए, मैं स्ट्रिक्टली आई फॉलो योर रूल, स्टॉक नहीं है तो मैं CC बेचता नहीं है, पैसा नहीं है मैं CSP बेचता नहीं है, क्योंकि डिलीवरी लेने का हिम्मत है तभी CSP बेचता हूँ। वो नहीं करता हूँ मैं कभी भी, जो स्पेकुलेटिव में करता ही नहीं है, सिंपल। तभी मैंने सर 77,000 IDFC आई एम हैविंग, ये करते करते इसको मैंने 47 रुपीज में एवरेज में लेके आ गया। मेरा समर अराउंड 59 था, लेके आ गया 47 में। 77,000 आई एम हैविंग। I am intent to buy another at least 1,23,000. I want to accumulate 2 to 3 lakhs of IDFC Bank. I know अभी तो है, अभी एक बार जो है उनका जो हायर फिक्स्ड डिपॉजिट का जो डिपॉजिट्स का वो खत्म हो गया, जो रिवाइज नीचे लगेगा, they will be getting around more than 5 to 6% spread actually. So that certainly that will show into the profits ना। अभी तो ऑलरेडी शुरू हो गया टेक ऑफ, हो जाएगा एक दिन में 1000 करोड़ दिखाएंगे तो पहुंच जाएगा, सब कुछ लगता है। बट जैसा DBS ने बोला लॉन्ग टर्म, एक तो लॉन्ग टर्म भी रखना है ना सर, बाकी तो इसमें चलो उसमें क्या लेंगे, लॉन्ग टर्म भी एक जगह रखना है जो अकॉर्डिंग टू द थिंग्स एक्चुअली। प्रेजेंटली देखो तो IDFC वेरी पुअर, ठीक है, आई विल नॉट कंसिडर, बट ठीक है वहां कमा रहा है, ये दर कमा रहा हूँ, सब कुछ बैंक में ही रखेंगे क्या 1 लाख मल्टीबैगर बनेगा, ये मेरा ओपिनियन, आई मे बी रॉन्ग बट आई एम पुटिंग इट इन IDFC and I am playing this method, I am continuously reducing the thing also। उसमें एक और मैं करता हूँ IDFC में, जब चलता रहता है ना मैक्सिमम 99% देखता हूँ, ऊपर चला गया उसके बाद MA LRC वॉच करता हूँ, एक बार हाइकेनेसी में रेड कैंडल आ गया ना तो पूरा का पूरा उठा के बेच देता हूँ 77,000। उसके बाद नीचे आ रहा है मार्केट, आएगा ये इधर फर्स्ट रेड कैंडल में बेचो, या तो MA LRC के नीचे क्रॉस ओवर में आप बेच दो, दैट इज वेरी सेफ। क्रॉस ओवर कर दिया 30% बेच दो, क्या दिक्कत है, फिर फॉल सिग्नल समझ गया ऊपर लॉन्ग कर लो, बेचे, फिर नीचे गया उसी को 30% बेच दीजिए, सेम थिंग 100% आई एम टेलिंग यू, फैंटास्टिक प्रॉफिट। वो नीचे आ गया आगे MA वॉच करते रहिए, जब यहाँ पर रिवर्सल आ गया पूरा का पूरा 30% जो बेचा है और डिफरेंशियल अमाउंट जितना उसका भी वॉल्यूम दे दो, बस आपका वॉल्यूम भी बढ़ता रहेगा इनडायरेक्टली, आप समझ लीजिए कमाए नहीं, दैट्स ऑल, सोच लीजिए कमाए नहीं, ऊपर का नीचे का डिफरेंस है। if it goes by around 10% instead of 30%, you will get 35% of the volume। एक तो या तो पैसा कमाना या तो वॉल्यूम बढ़ाना, दैट्स ऑल।
वॉल्यूम बढ़ाएगा तो लॉन्ग टर्म प्ले यू गेट एक्चुअली धीरे 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 एवरेज रिड्यूस हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। जब ये पिकअप करेगा जैसा डीबीएस बताते हैं, एक्चुअली इट गोस इन साइडवेज, सडनली इट पिक्स अप, एवरी स्क्रिप्ट विल पिक अप, particularly financial has to take first lead. Without first, everywhere the financial has to take first lead. When the financial takes the first lead on the upper side actually, तो हमारा भी ऊपर जाएगा। बाकी अगर 20% जाएगा, हमारा 10-15% तो जाएगा। चलिए खत्म करते हैं फिर, उमाशंकर जी खत्म करते हैं, ऑलरेडी हो गया 136। ओके सर, हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल द मेंबर for joining today. Sir, we should thank you, Mr. Umashankar and Pitambram and other people, sir. Really, I mean, great services. I mean, instead of you thanking us, we should always, feel obliged. In fact, thank you very much. Thank you so much. Nice of you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Kothari sir. Nice discussion. Thank you, Umashankar ji. Okay, sir. It's a godsend opportunity. Thank you, for me. bye-bye. God bless you, sir. God bless you. God bless you. Thank you, sir. Only that's all. I want blessings, nothing more than that. Thank So you. Umashankar, you are back in the group now. You are back in the group. 100%, sir. Now I am standing on the door. You have to